लाइव स्ट्रीम और एक्सएम रुका गाइस, मैं जेंशिन लॉन्च कर रहा हूं। वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। आज हम खेलने वाले जेंशिन इम्पैक्ट। कम बैक क्यों बोल रहा हूं, वेलकम बोलना चाहिए ना। क्राइम्स गधा, क्राइम चीचा बड़ा बड़ा गधा गधा कौन से गधेगा। आज हम करने वाला वो क्वेस्ट इराडोरी फेस्टिवल वाला जो क्वेस्ट है, एक दिन के लिए वेट करने को बोला था, वो करेंगे। लेकिन उसके पहले हम करेंगे कमीशंस के लिए। कमीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे अगर इराडोरी फेस्टिवल का आज खाली एक ही क्वेस्ट मिलता है तो बहुत खराब है मेरे लिए। इसी वजह से मैं इराडोरी फेस्टिवल का एक और क्वेस्ट करने वाला हूँ। नेट खराब है क्या? लाइक शायद से नहीं, चैट ठीक से दिख नहीं रहा है। ठीक है,
ठीक से दिख जाना चाहिए ना, वरना कोई चैट करके चला जाएगा और फिर मैं बोला है ना मुझसे चैट पर आएगी पहले। एक सेकंड रुको, ये यामी को रेड एंड शुगर का प्रमोशन चल रहा है क्या? जेन्यू, हाँ जेन्यू का बुक है ना, लेजेंड्स ऑफ द स्वॉर्ड ना, लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तन 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 तन। आ मच्छर क्यों काट रहे हैं आज? इसे रुक जाए तो गाइस मैं अपना ऑडियो चेक कर लेता हूं अपने स्ट्रीम पे। हाँ ठीक है, ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट है, वरना मेरा कभी कभी अगर मैंने म्यूट कर लिया तो कोई बंदा आएगा और देख के चला जाएगा, व्हिच इज नॉट गुड। व्यूज भी ठीक है, व्यूज तो अच्छे लगते हैं लेकिन फिर भी खाली व्यूज के लिए हम नहीं खेलते, हम खेलते हैं और भी बहुत कुछ, चलो व्यूज के लिए खेलते हैं। Crimes exposed unlocks in 10 hours। उसने अभी तो बोला कि नहीं ये होता है कल खुलेगा, तो आज 10 घंटे बाद खुलेगा। मेरा तो कट गया यार, ये बहुत गंदे है। चलिए एक बार करते हैं। मालूम है भाई, सुपीरियर कौन बोलता है? तो सुपीरियर बोलता है भाई आपका। तो टाइम लिमिट चेंज कर दो भाई, हमारे गवर्नमेंट में तो टाइम लिमिट कभी भी चेंज कर देते हैं भाई। वाह, मतलब जितना जो काम कमीशन कंप्लीट करे तो उसका उतना बोनस मिलता है। और या albedos नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ओ ये ईचो है। गाइड्स है, मुझे अराटा की ईचो पता है कौन। नींबू वाला पक्का होगा।
भाई? बहुत छोटा चेहरा वाला। फिर बोल। तो और ये लोग पैसे के लिए आए हैं, कुछ नहीं। वही है, साइमन बहुत इंटेलिजेंट भी है और फिर क्या, ओ स्टोरी। भाई साहब, एक लाइन लिखने के लिए 1 महीना कौन निकालता है यार? भाई 20 पेजेस कैसे भाई? वो एक लाइन लिखे 1 महीने। फिर तो इसी टाइप की एक्सप्लेनेशन। भाई तू क्या ना तुझे ना वेंटी के पास जाना चाहिए, उसके पास अच्छे वाले स्टैंसेस मिलते हैं। अनयूजुअल क्या है भाई? सेम ही तो दिखता है। तो अब शायद अंधे हैं, खाली हैट्स पहने और कुछ नहीं, ये हैट्स नहीं पहनते बस। कुछ बात तो दिमाग लगाते हैं। तो
ये लोग कुछ नहीं कर रहा, बाकी खाली टाइम वेस्ट। आइसक्रीम खा भी ना था। पड़ी नहीं बाइक के कमी। क्या हुआ भाई? तो मारपीट करते हैं। ये लाइन हेलो भाई, कहीं पर भी कर लेते हैं ना, क्या है? भाई सभी लोग ही है यार, मॉन्स्टर से लोग बुलवाए हैं तो सब लोग होंगे ना। हाँ, क्या बोल रहे हो शुभम भैया? हेलो शुभम भैया, वेलकम टू द स्ट्रीम। मेन्यू वाला कमेंट काम कर रहा है क्या? एक बार एक्सक्लेमेशन मार्क मेन्यू भी डाल के देखना एक बार। एक बार एक्सक्लेमेशन मेन्यू डाल के देखो तो आएगा शायद। ब्रो जब एक्सक्लेमेशन मेन्यू डाल के देखो। हाँ हाँ, ठीक से काम कर रहा है। चलो राइट।
चलो हुआ है गिफ्ट भी हो गया। थैंक यू शुभम भैया सब टेस्ट करने के लिए। मेरा मैकेनिज्म सब वर्क कर रहा है, अब खाली बस मुझे और भी स्टॉक Toma, my bro, my guy, my dude. Maybe I didn't explain properly. When I said 2 points, that's out of a total of 2. If there's one thing the Arataki gang is known for, I kid you not, it's our patience and responsibility. It's an awesome idea, totally hardcore, practically tailor-made just for me. Traveler, let's do this for our duel, huh? It'll be amazing. Whoever volunteers the hardest wins. What do you think? You seemed too interested in it just a second ago. Hey, this is the mighty Arataki, above all bold-blooded Ito you're talking to here. AKA doesn't want people to know he's only doing it for the drinks kind of guy. If it's decided, then allow me to take the role of your judge. The volunteer work is simple. You just need to give your help to people who need it during the festival. I will assign some job requests that I've already received to you. If you're ready, we can begin. Okay, our first job is to help a busy vendor. His stand is just nearby. Your brigade will definitely be a big hit. Are you the volunteers? As you can see, I've just been so... Can you help me clean up? I'm so grateful to have... ये करना है क्या? Escape. अरे मेरा पार्टी सेटअप नहीं है, लग गए। और इसके लिए ओ नहीं मोना चाहिए होता है। ये क्या हो रहा है यार? किससे क्लीन होगा ये? हवे से? थोड़ी देर बाद होता है भैया, देख के। हम तो हार ही गए। This world is full of भाई डुअल करना अच्छा था ना। You finished already? You're wonderful. Let's see. Our next job is to help a visitor. हार गया। हो जा। क्या हो रहा है? आज कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। Hey, Kujirai! I'm not playing it. I heard they were selling, but can you help me? So... Thanks for your support. This festival is so lively. भाई क्या है ये? Great! Now I can play the Tamari game again. तुम्हारी गेम है भाई। कौन सा गेम की बात कर रहा है ये? Thanks, Miss. Okay, one last job. We need to help move some goods at the port. Let's go! पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा वाह। Are you the festival volunteers? Yes. Great. I was just one, but I have to get. Can you please help me take it? चलो। Take the goods to warehouse. भाई अब warehouse कौन सा है? You must be the volunteers here to... You must be tired. I heard they got soy milk is actually one... In fact, the... What?
So Ito won't be able to hurry! We've got to get to Sailing Breeze. Sit right here and try my Inazuma sauce. What took you so long? I've been here ages. Completed my tasks a long time ago. So there you have it. When volunteering is the name of the game, no one volunteers harder than Arataki Ito. यार ये duel नहीं है मेरे को चाहिए था वो one to one You battle lose, I win, and to the victor go the special edition spoils. Behold, the Drink of Champions, created by Sailing Breeze in collaboration with Yai Publishing House, and as featured in the popular work Pretty Please Kitsune Guji. Woo! All this talk's making me thirsty. Don't mind if I do. Drink of Champions, it's time to come home. अरे नहीं Woo! That's the good stuff. लग लिया That was a mighty fine drink. Although, maybe it was past its prime. Boss, they said they think there might be, beans in the drink. Huh? ये लग गए a mighty figure The boss is down! The boss is down! वह हॉस्पिटल लेके Quick, हॉस्पिटल get him to a doctor! What's wrong? Can't Arataki Ito drink soy products? He's allergic to beans! Oh, my goodness. Okay, quick, grab Ito and follow me. I'll get a doctor. I sure hope it's not. I'm sorry. I didn't even consider this possibility. It was all my fault. Leave Ito to me. I'll make sure he stands again. तुम्हें बाद में बोलना यार Don't worry. वो I'll मर see you later. जाएगा allergy is not good hello Lord Setan भैया So, your friend is allergic to beans. It's a Yes. very rare condition, though I have heard about it. I'm so sorry that our drink caused such a problem. I feel terrible. If you don't mind, please take this. This is a special drink formula with no soy milk. I could see that your friend enjoyed this drink a lot. Although it tastes slightly different without the soy milk, I'm sure this version will be more suitable for your friend. सच Please accept it, along with our sincere apologies. कितना है यार है 45 बहुत बीच में खेला नहीं है ना इसी वजह से 45 अब एक साथ नहीं खेल पाए तो क्या है ना तो है ना हाँ रेसिपी ना रेसिपी काम करता है और 5-star कौन से is Sum hello Sum welcome to the stream 5-star कौन से है ये देखो डीलुक मोना कचिंग योइमिया फिर बहुत कम ही है और है और नहीं है खाली 5-star बहुत कम ही है 5-star मैंने लिया ही नहीं है ये है 1 2 3 और 4 और यूएमए भी गलती से निकल गया था मुझे चाहिए भी नहीं था वो मैं पीटी बिल्ड कर रहा था और फिर बिल्ड करते करते गलती से यूएमए निकल गई अलग बात है वो हाँ ये क्वेस्ट खत्म है स्काईवर्ड हार्ट लॉस्ट क्लियर with 2 5-star weapons here 45 3 वाओ हाँ मालूम नहीं मुझे शायद से मैं लकी हूँ मुझे भी मालूम नहीं है तो कहाँ पे है इसके पास हाँ ये इसके पास है 5-star वाला और 5-star
भूल गया मैं हमेशा भूल जाता हूँ। इसमें सारे नॉर्मल वेपन्स। मुझे अपना 5 स्टार वेपन AR-52 पे मिला था। एक्चुअली बोल सकता मैं अनलकी हूँ क्योंकि वो मेरा को एक 5 स्टार इवेंट बैनर से मिला है। वो इवेंट बैनर से मिला है मुझे। लॉस्ट प्लेयर, हाँ ये ना, हाँ ये वाला बुक भी मुझे इससे मिला था, लेकिन इसको मैं और भी एनहांस कर सकता हूँ। मैंने किया क्यों नहीं है मालूम नहीं। इसको कर सकते हैं। मैंने ना ही मोना ठीक से बिल्ड किया नहीं कुछ और बिल्ड किया अभी तक। तो बिल्ड ठीक है, मैं बिल्डिंग में ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, वरना दे देता। चलो ये दोनों क्वेस्ट हो गए, ये दोनों क्वेस्ट हो गए। ये 10 घंटे पे खुलेगा। तो अभी हम बचे हैं खाली कमीशंस। हमारे लिए बचे कमीशंस, तो कमीशंस करेंगे, फिर हमें मिलेगा स्टोरी क्वेस्ट। गॉड बच गया आज कंटेंट की कमी। I still have a lot to do with the guild. वरना भी गेम स्विच करना पड़ता है। लॉस्ट प्लेयर R2 है व्हाट? स्काईवर्ड हार्ट को अपडेट करो, ये में बहुत पावरफुल है, कैरी कर देगी वो। ठीक है, इसके लिए है, लेकिन एनहांस तो बस। मेरे को ये चाहिए पिछले फ्राइडे एंड संडे। आज संडे है। ओ सुवेनियर शॉप से खरीद सकता हूँ। सुवेनियर शॉप से खरीद लेता हूँ, इसको कॉपी कर देते हैं। वाह सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। मैं कैसी आवाज निकाल रहा है यार, क्रिंजी आवाज निकाल रहा हूँ भाई। स्ट्रीम छोड़ के सब भाग जाएंगे। क्राइम्स क्रिंजी कर रहा है। हैं? मैंने खरीद लिया? मैंने कब खरीदा था ये? मुझे मालूम नहीं है सच में यार। अब तो मुझे सुवेनियर तो उससे नहीं मिलेगा, फिर तो मुझे अभी करना ही पड़ेगा। गाइस इट्स टाइम फॉर दी रेट। भाई सीरियसली R2 लॉस्ट प्लेयर हाउ सीक्रेट है कुछ है। मैं हैक वैक नहीं करता, इसमें नहीं करता। अच्छा वो कर लेंगे, पहले हम कमीशंस कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा करूं? कमीशंस पहले करूं कि मेलिंग कर रखी है अकाउंट में? कर रखी वेलिंग कर रखी है क्या अकाउंट में? नहीं मैंने आज तक वेल नहीं की भाई, उतना मेरे पास पेशेंस ही नहीं है। लॉस्ट मैंने R2 क्यों किया? क्या खोल रहा हूँ मैं बार बार? मेरा कीबोर्ड आज काम नहीं कर रहा है। R2 मतलब क्या बोलना चाहते? रिफाइनमेंट की लेवल की बात कर रहे हैं? भाई R2 करने अलग बात है, और तो लॉस्ट प्लेयर मिली कैसे? दो कैसे मिले? दो तो नहीं है, बस दो है। नहीं दो नहीं है।
एक ही तो है, डिफेंडमेंट रैंक भी तो एक ही है, ये ठीक है। चैट पे कुछ तो चल रहा है मेरा। मैं जेंशिन प्लेयर भी नहीं हूँ भाई, लाइक खेलता तो हूँ लेकिन मोना पे है लॉस्ट प्लेयर। ओ क्या खोल रहा है यार, क्राइम्स कीबोर्ड में चेंज करके आऊंगा कल स्वैप से। पेमेंट ट्रैक हाँ ये मुझे 2 मिला है ये मुझे 2 मिला है। हाँ मैंने दोनों को ये कर दिया था, ये मोना वाली। ओके देखा क्या हुआ। जल्दी कमीशन करने हैं, फिर कोई स्टोरी क्वेस्ट खेलेंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टोरी क्वेस्ट अवेलेबल है और प्रीमो जेम्स की भरपूर लाइक सप्लाई है। मैंने मतलब इतने 2 मिल गए और रिफाइन भी कर लिया, कर डाली। वाह हाँ मैंने तब रिफाइन भी कर दिया था। मेरे साथ ना ये शॉर्ट फॉर्म जो होता है ना, ये थोड़ा सा लाइक कभी समझ में नहीं आता और अभी तो मैं कंफ्यूज हो गया था खतरनाक वाला। क्या बात कर रहे हैं यार, कौन सा गेम की बात कर रहे हैं? ये क्या है? और एक और ये मेरे ग्रेवस्टोन रिफाइन नहीं कर रहा है, ये तो लॉस्ट से रिफाइन करके बैठा है। में मुझे ग्रेवस्टोन चाहिए डिलीट के लिए, वो बहुत अच्छा होता है मैंने सुना है। मेरे को मोना मिली लॉस्ट 50-50 C1 मोना। भाई F2P के लिए दर्द है भाई। मोना पे मोना मिलता है मेरे को, अभी तो नहीं मिला। मैं एक्चुअली कुछ ज्यादा नहीं करता भाई, मैं ऐसा बंदा हूँ ना जो नए कैरेक्टर ज्यादा अपडेट करता है, नए कुछ और करता है, नए कमीशंस करता है। खाली आर्कॉन क्वेस्ट खेलने के लिए एक्चुअली मैं देख रहा था कुछ स्टोरी गेम का, लेकिन फिर जेंशिन देखा तो जेंशिन का स्टोरी है उसके साथ देख लिया वो अलग है। मेरा राइट क्लिक क्यों मालूम, लेकिन स्प्रिंटिंग पे लॉक है। मतलब मैं जैसे ही राइट क्लिक दबाऊंगा मेरा स्प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी स्प्रिंटिंग कर रहा हूँ राइट क्लिक से। खतरनाक लकी। काजू कॉन्फर्म हो गया, काजू कॉन्फर्म हो गया मतलब वो काजुआ बोल रहा है। काजू का क्या मतलब? कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया? काजुआ। काजुआ क्या है? ओ काजुआ, काजू शॉर्ट फॉर्म। काजुआ को काजू कौन बोलता है भाई साहब? मेरे को सच में देशी कम्युनिटी एक्चुअली मालूम ही नहीं है क्या है। शायद कुछ तो होगा। भाई मैं ऊपर कैसे जाऊं? भाई ये तो फोड़ देंगे सब कुछ। ये कर करने पे होता क्या? चलो उसको नीचे तो गिरा दो। 4000 का डैमेज होता है। इसको खोल देता हूँ।
थंबनेल ऐसा क्यों बनाया है? थंबनेल ऐसा क्यों बनाया है? मालूम नहीं। कल मैंने एक स्क्रीनशॉट खींचा था, एक कामिसा तो आया तो वाला क्वेश्चन करा था। मैं काजू बोलता हूँ। ओके भैया, नो प्रॉब्लम। खाली मेरे को थोड़ा सा बता देना अगर मैंने गलत बोल दिया। क्यों मेरे को ये शॉर्ट फॉर्म वो वाला था। कहाँ पे जा रहा है? वो भी तेरी जगह है, तेरी जगह है, ये तेरी जगह है। हाँ तेरी जगह है ये। सी ऑफ थिप्स का एक बंदा स्ट्रीम कर रहा है। हाँ कल स्ट्रीम कर रहा था। Dodge that. Don't push your luck. अरे क्या ऐसा कौन थंबनेल बनाता है? ऐसा कौन थंबनेल बनाता है ऐसा? क्यों क्या हुआ? मैंने बोला ना मैं कैनवास से बनाता हूँ तो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही ना। मैंने ये नहीं किया, इलस्ट्रेटर नहीं किया। इलस्ट्रेटर मुझे सीखना पड़ेगा। अब देखा था उसमें समय देखा था वो की भाई साहब मैंने ये अभी स्पॉन हुआ ना। मैंने अपने टैलेंट्स थोड़े से बढ़ा दिया ना, इस वजह से ज्यादा डैमेज हो रहा है। मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। अरे फूट दे भाई। बहुत चर्बी चढ़ी ना तेरे दोनों को। जल्दी चल। अरे कहाँ गया? भाई मैं इधर मारे जा रहा हूँ, उधर जाके पहुंच भी गया। मैं वही देखा कि कहाँ गया। भाई बोल गया पाताल में चला गया। कौन हेल्प चाहिए किस यार? लिटरली यार मैं ऐसे कि हिट रहा हूँ कि तो लग रहा है मैं मिशंस भी नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत गंदी खेल रहा हूँ, मुझे मालूम है। ये एक्चुअली मेरा कीबोर्ड गंदा चल रहा है आज मैं अलग स्टाइल पे बैठा हूँ ना, इस वजह से मैं ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से मैंने अभी रिसेंटली पीसी पे स्विच किया। मैं पहले मोबाइल प्लेयर था, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है गाइस। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। मैं ना लाइव आ गया यार, ये तो बहुत रिकन इन द स्टार्स। मतलब क्या लाइव चला दिया हूँ और साउंड कम कर दिया पूरा। ठीक है लाइव चल रहा है और मेरा वो पॉइंट भी बढ़ रहा है। This was well done. Delve into destiny. This is bad. घर जा बेटे, घर जा। उनका उस सब का मन नहीं जाएगा वो लोग मार के जाऊंगा। भाई एक हिट पे दोनों को ले गया। No excuse for slacking. ओ ये मोटा गेंडा है, ये तो बहुत ज्यादा ये मारता है। गेंडा हाँ ये गेंडा है भाई, ये देखो दोनों गेंडे हैं, बड़े गेंडे हैं ये बहुत अच्छे गेंडे हैं। एक वाटर मारेगा, एक आइस मारेगा। ऐसे ही वही देने ना, वाले और दोनों स्पैम करने वाले हैं गाइस। स्पैम करेंगे गंदा वाला। आइस वाले को पहले, वाटर वाले को मारो पहले, वाटर वाले को। हाँ वही ना। मैंने पहले आइस वाले को ही मार दिया। आया वाटर। Cool it. इसके शील्ड्स नहीं टूटते, लाइक ये डायरेक्ट डैमेज होता है
क्या मैंने इसका शील्ड दिया ही क्यों है भाई? इसका शील्ड दिया ही क्यों है? एक इन कुछ दिनों से ना मेरे कमर पे ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं स्ट्रीम ना क्या मालूम मैं अभी ज्यादा स्ट्रीम करने लगा हूँ। कमर में दर्द है फिर भी मैं ज्यादा स्ट्रीम करने लगा हूँ। कल 5 घंटे का ऑलमोस्ट किया था स्ट्रीम। नहीं पता है, जब दर्द होता है तभी मैं ज्यादा स्ट्रीम करता हूँ, जब दर्द बिल्कुल ही नहीं होता तो मैं स्ट्रीम करता ही नहीं हूँ। 1 घंटे 2 घंटे करके छोड़ देता हूँ। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, अनप्रेडिक्टेबल। पॉइंट देखता हूँ मैं। पॉइंट्स देखो, खेलो गेम खेलो। I still have a lot to do with the बार-बार लॉस हो जा रहा है। वो कितने मछली आपको पता है? क्या? लाइक मेरे शीप पे अभी 3 का बच गया। लेकिन मेरे को डाउट हो रहा है, अगर कोई नया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उससे, आप उसको क्या बोलना चाहोगे बताओ? कैसे हुआ अभी तक? क्या? नहीं अभी 2 हो गया वॉचिंग। हाँ अरे नहीं नो प्रॉब्लम, एक और आ जाएगा। तो मैं बोल रहा कि आप बोलो कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको क्या बोलना चाहोगे आप? मैं क्या इलेक्ट्रोफॉक बताओ बताओ। इलेक्ट्रोफॉक कहाँ है? अगर ये सब तक 3 बार। ओ भाई क्या डैमेज है? मारो। ओ भाई वो भी डैमेज मार रहा है मुझे, खतरनाक डैमेज मार रहा है। मारा एक शील्ड ही टूट गया खत्म। हाँ शील्ड डायरेक्ट तोड़ दिया मैंने उसका मारो काया का मोना का पहले मारो फिर काया का मारो उसको स्पीड करो। This moment will be frozen. डन मर गया। अरे यार ये बार नीचे फेंक रहा है मुझे। really hate these guys. Mushrooms बता। ओ ये लर्न नहीं किया मैंने अभी तक काया नहीं। तो ऊपर ना फाउल मिल गया मुझे। ये फाउल खा रहा था क्या अभी? 5 स्टार खाना पका। 5 स्टार खाना 5 स्टार है तुम्हारे पास, बना सकते 5 स्टार खाना? हाँ बना सकते हो बना कर देखो। I suppose this will do. 5 स्टार खाना? हाँ का भी स्टार होता है? हाँ बनाना। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। हाँ एडेप्टर्स टेम्पटेशन नीचे नहीं मुझे दिख तो नहीं रहा। अरे नहीं यही है बना नहीं ये हील नहीं करता। ये किसके लिए है? अटैक 80 के अटैक डैमेज बना दो। हील करने वाला नहीं होता है 5 स्टार खाना। नहीं डिफेंस अटैक ये सब बढ़ाता है। चलो मैं स्वीट मैडम बनाता हूँ। ये मैं जितनी चाहे उतनी बना सकता, लेकिन खाली वो स्वीट फ्लावर होना चाहिए। चिकन तंदूरी। हाँ दिखता है चिकन तंदूरी, लेकिन बोलते हैं स्वीट मैडम बोलते हैं ना। क्या नाम है इसका? स्वीट मैडम। हाँ रुक जाता है। गाना बहुत पीछे अच्छा चल रहा है। ओ इसको मारना नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था। इसको मैंने ऐसे ही मार दिया। ये इलेक्ट्रो पार्टिकल्स मतलब कलेक्टेड पार्टिकल। ओ जल्दी आगे चल। टी
रुक और कैसे जाना है भाई? टी 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 ऊपर साइड पे है। नहीं एक और चाहिए था ना यार। कितने कलेक्ट किए थे मैंने? कलेक्ट कितने किए थे यार? मैंने तो टाइम वेस्ट किया ना, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या क्वेस्ट क्या है। मैं बहुत घूमने की तरफ हूँ, बहुत ज्यादा ही। ओ इधर से पहले स्टार्ट करना है। फिर इधर से फिर चाहिए होगा। क्या हो रहा है ये? इधर वाला लेता हूँ। ये वाला भी ले लेता हूँ। फिर इधर वाला लेना है और फिर इधर वाला और देन नाउ ये ले लिया मैंने, कंप्लीटेड। फिर ये भी क्वेश्चन है, ये तो क्वेस्ट कौन सा है यार? इतना बड़ा जगह पे क्या है? इलेक्ट्रोफॉग। अब इलेक्ट्रोफॉग कहाँ है भाई? इलेक्ट्रोफॉग कहाँ है? बेकार 5 साल क्वेश्चन बनाते हैं ना आजकल। इतना बड़ा जगह पे इलेक्ट्रोफॉग कहाँ मिलेगा? ये बताओ ना, इलेक्ट्रोफॉग इतनी बड़ी जगह पे कहाँ मिलेगा मुझे? आप देख रहे हो क्या स्ट्रीम? अब देख रहे हो स्ट्रीम? लेजेंडरी भैया पे इतना दर्द का कर रहा है आजकल, बहुत ज्यादा दर्द करने नहीं। मुझे तुम लोग नहीं मारना, तुम लोग बहुत बोरिंग हो गए तो नहीं मारना मुझे। तुम्हारी जान मैं आज बख्श देता हूँ। इलेक्ट्रोफॉग में कहाँ से करूँ भाई? कहाँ से करूँ? ये है क्या? वो ये स्ट्रीम कर रहा है अभी? आज छुट्टी? आज छुट्टी है ना, आज तो संडे है, आज छुट्टी है। कल भी छुट्टी था, आज छुट्टी है। भाई प्लीज लास्ट वाला क्वेश्चन में रहो, कोई बता दो यार कमेंट्स पे, जो भी है, जो भी चैट पे है यार बता दो यार, प्लीज यार बता दो। कौन करता है? इलेक्ट्रोफॉग कहाँ से ठीक करूँ यार? मैं कहाँ से करूँ? आप ही बताओ ना मुझे।
मुझे बताओ कि ये क्वेस्ट जो है ना ये कैसे करते हैं, ये क्वेस्ट कैसे करते हैं, लेजेंडरी क्या कैसे करते हैं ये क्वेस्ट। ये क्या इलेक्ट्रोफॉक, हाँ ये है ये क्या चल रहा है ये। नहीं ये इलेक्ट्रोफॉक नहीं है। इलेक्ट्रोफॉक क्या है बोलना चाहता है ये इधर, मतलब क्या ही बोलना चाहता है इधर, काफी बता दो यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही कौन सा क्वेस्ट है, कैसे करना है, कैसे करना है कैसे इलेक्ट्रोफॉक मुझे मिला ही नहीं कहीं पर। Better than nothing. विश, अरे आप मुझे ये बताओ कि ये वाला क्वेस्ट कैसे करना, विश बाद में कर लेना। X yes. अच्छा है यार, ये लाज आज का क्वेस्ट है यार, आई डोंट नो। रुको मैं एक बार YouTube पे जाके देख लेता हूँ। ना आज तक ये क्वेस्ट नहीं किए, लाइक ये वाला कमीशन। You should really bring the Knights of Favonius with you next time. अब समझ में आया मुझे। अब समझ में आया मुझे। ओह यार, क्या टट्टी यार, इधर जाके करना है, नीचे है ये 3 किलो इधर एक्चुअली मीटर से दिखा रहा है ना कितने मीटर्स के अंदर है, और नीचे ये टेंपल भी है। पता नहीं गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अभी कर दो। यस गाइस, कर दो सब्सक्राइब नाउ। अच्छा बताओ कौन सा क्वेस्ट करेगी, यूला सांगोनोमिया कोकोमी के राइजिन शुगर। गाइस बताओ वही क्वेस्ट करेंगे। सांगोनोमिया कोकोमी का मैंने नहीं देखा है, रेडियन शोगन का मैंने लाइक YouTube पे देख लिया था। यूला का भी मैंने शायद से थोड़ा देख लिया था। यूला के लिए मॉन्स्टर जाना पड़ेगा और सांगोनोमिया कोकोमी के लिए इधर ही रहना पड़ेगा। तो आगे बताओ गाइस। यूला ओके, जस्ट बिकॉज़ आप बोल रहे हैं यूला तो यूला ही करते हैं। मेरा बहुत बैड फीलिंग आ रहा है, पता नहीं।
achievements खोल के देखो यूला करेंगे गाइस यूला वाला क्वेस्ट फाइनली 300 साल के बाद मैंने सारे क्वेस्ट कर लिए लेकिन खाली यूला का छोड़ के लेकिन आज हम यूला भी कर लेंगे फिर हमारे मॉन्स्टर कर जितना भी स्टोरी क्वेस्ट बचे था वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब मेरे को इसको डराने में बहुत मजा आता है पता है पीठ दर्द कर रहा है इतना नहीं होता है शायद से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है सो गाइस मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। Thank you for coming on such short notice, Honorary Knight. I know you must be busy. Well, to make a long story short, there's a particular matter at hand that the Knights requires your assistance with. I have been meaning to have a word with you if the occasion presented itself, but as you know, Mondstadt's safety must always be my first priority. I have recently received multiple reports from the Knights of someone within the Lawrence clan having close dealings with the Fatui. The Fatui? Again? But who are the Lawrence clan? There was a dark period in Mondstadt's history when the aristocracy ruled over the city. The hard-won freedom that followed with the fall of Decarabian was lost once again as slavery spread throughout the land. The first Dandelion Knight, Vanessa, spearheaded the revolution that overthrew the old aristocratic system and established the Knights of Favonius, leading Mondstadt to become the city that you see today. The aristocrats that had oppressed the people of Mondstadt were none other than the Lawrence clan. Oh, Paimon gets it! So the clan's descendants are now scheming with the bad guys to carry out more dubious deeds. We suspect as much, though we have yet to obtain any solid evidence. The reason I summoned you here today is to ask you to help us further investigate this matter. Unfortunately, the Knights of Favonius and the aristocracy have been at odds with one another for as long as I can remember. We've already considered every possible way of resolving our differences, but it seems the descendants of the aristocracy remain antagonistic towards the Knights. No matter what stance we take when dealing with them, the outcome is always the same. Our efforts only result in adding more fuel to the flames. We could come knocking on their door on the grounds of a search warrant, but if the investigation were to come up empty, I'm afraid tensions and distrust would only increase. All of our past efforts would have been wasted. तो क्या करें हम? But as an honorary knight, I technically also belong to the Knights. Right. You are in fact the best candidate to represent the Knights of Favonius. Wow. But you need not emphasize your role as the honorary knight. You're a traveler from a distant land, and you can approach the aristocrats in this way. Once you come to friendly terms with the Lawrence clan, you should be in a good position to learn more of their possible connections with the Fatui. Leave it to Master Jean to come up with such a brilliant plan. Perhaps such plans have become second nature after all the diplomatic issues I've dealt with. The name of the Lawrence clan member in question is Schubert. Lately, he can often be found strolling near the northern city walls. It is said that he is difficult to get along with due to his temperamental disposition. But if you approach him calmly, then things should go off without a hitch. Thanks again for your help. If you run into any snags along the way, I'll do anything in my power to support you. और 20 points 40 points मिल गया आपको थोड़ा सा हार्ड गेम है एक्चुअली तो लाइक मैंने क्रिक्स भैया एक है लाइक क्रिक्स प्लेस जेंशिन स्ट्रीम करता हूँ तो उनका जो कुछ लोग हैं ना वो लाइक उनका बहुत लाख पे लाइक पॉइंट्स है कुछ बंदे की मैं वही लाख 1 लाख 2 लाख
इतना कैसे किया? 100,000 वो सब गैम्बल करके किया है उन्होंने, सारे पॉइंट्स गैम्बल करते लाइक बहुत पुराने सब्सक्राइबर थे, 1 साल पुराने सब्सक्राइबर। तब तो हो जाएगा। Huh? Who are you? Hello, we're here too. Hello? अगर मैं डायरेक्ट 40 का मारूंगा पूरा लॉस हो गया। Wrong? Did you just say what's wrong? Yes. Huh. And I suppose you think that you can simply strut up here and greet me in such an ignoble and vulgar manner? Given that I don't recognize you, I can only assume that you are a traveler of some variety. I'll have you know that you are speaking with the Schubert Lawrence, a blood descendant of the magnanimous nobility. If you wish to address me, you'd best consider your words more carefully. Such nonchalant manners are inadmissible and will never do. Now, if you're somehow capable of understanding anything I've said, then you will get down on your knees, apologize for your negligent actions, and give me a proper introduction. That is the appropriate etiquette. That's etiquette? Paimon's never heard of something so complicated before. 40 दाढ़ी वाला आदमी। In former times, when people knew their place and respected traditions, such conduct was only basic courtesy when greeting a nobleman. And neglecting your manners would result in a swift whipping. But look at the world now. Rules have been thrown to the wayside and manners forgotten. I cannot bear to see such degradation. What did you say? You dare question the dignity of the nobility? Yes! I'll have you know that though the Lawrence clan is in decline, myself and others of noble blood are looking for a chance to restore our rightful honor. Just look around. The people are unruly and undisciplined. I, however, strive to retain the elegance and etiquette of the nobility. After all, we are of a completely different breed by birth. Save your words. I find your manners and bearing repulsive. I have nothing to discuss with the likes of you. Besides, I am in no way obligated to instruct commoners on basic courtesies. Now I have more pressing matters to attend to. I'll take my leave. कहाँ भागते जा रहा है बे? अभी रुक, मैं तेरे को अभी रेडियन शोगन के पास करवा जॉन्गी हमारे साथ खड़ा है। रेडियन शोगन है, सारे गॉड्स को मिलके मारेंगे। गॉड मिलके मारेंगे इसको। लेना था। क्या? जॉगलिन को लेना था। इन्हें कुछ बदतमीजी बर्बादी कर दी ना तो पूरा डेवेट हिल जाएगा भाई। A great legendary traveler is dead. फिर जोंगली एंड रेडियन शोगन दोनों लाइक उनका दिमाग गुस्सा हो जाएगा और वेंटी अपने सारे आर्कॉन वाली पावर्स फिर से अनलॉक कर लेगा। यूला यूज करने को मिलेगी। हाँ पता है। तो रेडियन शोगन भी मिलेगी। जंगलिन भी मिलेगा। Well, if it isn't the honorary knight. I'm just on my way out to gather some intel. I didn't expect to run into you here. Huh? Judging by your expression, you must have run into some trouble. Master Jean tasked us with a special assignment, but things seem to have run aground for the moment. No need to get down on yourself. Sometimes things just don't turn out as planned. Even I can't guarantee useful intel every time I'm dispatched. You just have to keep at it and never give up. Hey, why don't you let me try to help? What's the problem? Master Jean asked us to build a connection with someone named Schubert Lawrence. But it turns out that he's a peculiar character that doesn't listen to anyone. Especially Paimon. Aha, Schubert! I know him. Let me guess. He said you didn't have any manners.
I've been on the receiving end of his lectures many a time. The Lawrence clan can be very particular about such things. You mean everyone in the Lawrence clan is just a big headache? As aristocrats, they believe there should be a certain distance between themselves and common folk. I understand their thinking, but that's just not how things are anymore. However, there is one exception among the Lawrence clan, my good buddy, Eula. Buddy? That's right. Not only is she from the Lawrence clan, but she's also captain of the Knights of Favonia's 4th company. Oh, हमने क्यों क्या हुआ? दुख का क्या है? Eula is special. She's not quite like the other members of her clan. She has her own beliefs and it shows. नहीं In other देख रहा words, था she कौन doesn't सा है. really adhere to the strict rules and conventions of her family. However, she's still quite knowledgeable about dealing with the Lawrences. I'm sure you'll see what I mean if you meet her. That's strange. दुख है. If देखो Eula मेन्यू is a करो member मेन्यू of the मेन्यू. Lawrence clan, then why ऊपर would किया Master मैंने Jean देख. choose us नहीं for the नहीं, the cast? clashes official को Can't बोल you रहा just ask हूँ. Eula? मेन्यू करो. मैंने किया है. It's a little complicated. ऊपर Basically, देख. the Lawrence clan is frowned upon the fact that उसके Eula अंदर joined जो the भी है Knights. वो. Her family members don't particularly care for दुख है her. दुख. In At least their हमें eyes, कर देते. Eula is nothing but a traitor to the family. She's very easy to get along with. Just explain the situation, and I'm sure she'll help you come up with a way to get along with Schubert. In fact, I think she's out in the wilderness on patrol this morning. You should be able to find इमोशनल her वाला around करो मैं Storm भी Bear देख लूँगा Mountains. कैसा है. Thanks, Amber. All right, you heard her. Let's go find Eula. Good luck, you two. I've got my own matters to investigate. Who would have guessed the Knights have a member of the Lawrence clan? Well, if you want to learn about the conduct of the Lawrence clan, who better to ask than one of their own family members? आ गया मेन्यू. गाइस कोई अगर देख रहा है जो अभी तक सब्सक्राइब या फिर लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दो. प्लीज लाइक जल्दी करो. बाय बाय गाइस. What are they doing here? Is that why Eula was sent on patrol here? क्रीम्स की शादी हो रही है. भाई First साहब and talk later. मारो भाई साहब मारो. क्या डैमेज था. This was well done. मर गया. You need to hurry up. An unfortunate मर fault. गया मर गया मर गया. अरे रिडीम इमोशनल करना Send this पड़ता है. quickly. प्लस REDWEMI इमोशनल. काया मारो ना. Emotional damage! आएगा तुरंत आने वाला है. एक स्लैश. चलो कटसीन सॉरी. भाई वैलोरेंट खेल रहा है क्या? ऊपर से मारेगा. यूला आ गई. ये मैं एम में कर चुका हूँ. हाँ पता है. स्पॉइलर दोगे ना आप? ना ये मैंने भी एक बार किया है एक्चुअली. मैंने YouTube वीडियो से देखा है. मैं कर भी चुका हूँ. अच्छा. हाँ, that was funny now. Yes. You don't और think भी twice है, before reaching for your like, sword, पैसा do ही you? पैसा, फिर Do you have मजा any idea आएगा. how long ये I've been कुछ है, tracking these targets? इतना ज्यादा भी नहीं है अभी. धीरे-धीरे लर्न हूँ मैं. बहुत है. I know हो you सकता get to मैं stake a और claim. 7-8 ऐड करूँगा. You think you're अच्छा, stronger because you got to them first? Mark my words, vengeance will be mine. इस टूटू को नहीं. That's right. और 2 I मिनट heard का the टाइम commotion लिमिट and came है. as swiftly as I 2 could. मिनट बाद एक और Only to रिडीम find कर you सकते two हो. already fighting और the Fatu. points आपको जितना स्ट्रीम Not देखोगे only that, उतना points you are मिलते making रहेंगे. quick work of तो them. points देखो की कमी नहीं होती. If I didn't make my move, you would have been और able to जितने take points all the मिलेंगे credit. उसको अगर आप कैम्बल Still, करोगे तो और I'm भी glad ज्यादा you're मिलेगा. unscathed. ऐसे करो आपका Confronting that पॉइंट number दिख of Fatui जाएगा. at once can be dangerous.
मेरे पास 45 हो गया। 45 है। गैम्बल इनके पास खाली 5 कॉइन्स है और 5 मिनट पे आपको 5 कॉइन्स मिलेंगे। हर 5 मिनट पे आपको 5 कॉइन्स मिलेंगे। Sorry, आपको Paimon पैसा का doesn't देखना है understand what को you मिलता है। mean, but thanks for your concern. Concern? Why would I be concerned for the safety of my arch enemies? Arch enemies? Wait a minute. You were saying how glad you were that we were unscathed a second ago. By which I meant, if you were injured, I'd have to escort 2 strangers guilty of stealing my target all the way back to Mondstadt. Which would mean you'd cause me even more trouble. My vengeance would be swifter still. आने वाला है देखो। Yes, that's me. गैम्बल उसको आपको करना एक्सक्लेमेशन with her. फिर आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको लिखना पड़ेगा। You और 10 dare to call points someone करना you've है just पहले। met strange? Forget the aristocracy. That's rude even by normal standards. मेरा हो Speaking जाएगा of which, अभी। how do you know my name? This is the honorary knight of the Knights of Favonius. And speaking of rude, we're trying to मेरा arrest नाम an पर aristocrat named Schubert ऐसा क्यों Lawrence. होता है रेड? He's so obsessed with etiquette that he's not even willing to वो speak जीत with us. गया। I understand now. 55 हो गया। That's my uncle, all right. But why कहीं do पर you भी mean चेक to करता हूँ ना investigate him? तो ऐसा ही आता है रेड हाँ। रेड है ऑरेंज है 5 का विश नहीं होगा शायद से। 10 का होता है You मिनिमम have 10। some nerve to faming a family member right in front of me. I will have vengeance for मैं this जैसे too. जीत गया 55 No. This is an मतलब 20 assignment जीत from गया Master दोबारा Jean. It's just an investigation. That's बहुत सारे all. To रूल्स the होते हैं everyday भैया। citizens of Mondstadt, ये everyone in रूल्स the एक्चुअली Lawrence clan is scum. चेक करने के लिए होता है। अगर It's आप natural for हर एक rumors फ्रेम and में विश unwarranted एक gossip करते to lead जाओगे to तो such आपको 5 suspicion. मिलेगा। मतलब आप पॉइंट्स Hard to लूज avoid करोगे such a कम लेकिन आपको reputation मिलेगा when you're ज्यादा। known as the ruthless rulers of old Mondstadt. Oh, so that's what you think of me? Yes, sure भैया। Yet another transgression to about. avenge. But didn't you say it first? Oh. Curious. We've only just met, and you've already given me 3 causes for vengeance. It's been a while since I've encountered anyone as कर दूंगा interesting भैया as मैं you. आपको सिखा दूंगा। वो इजी है बहुत है। I assume you need me to teach you the रुको conduct of the Lawrence आपको clan. मेरा स्ट्रीम खत्म होने Only के then बाद will ना you finally आप be मुझे एक able बार to डिस्कॉर्ड communicate पे with my मैसेज uncle. करना। मैं Correct. फिर एक लाइव स्ट्रीम That's करूंगा right. डिस्कॉर्ड के Amber told us अंदर। to come and तो talk उसके to अंदर you. मैं आपको प्रोसेस दिखा Well दूंगा then, कैसे करते हैं। let's begin your training immediately. It'll be easier Some- to train when we're back in यूला वाला कर Mondstadt. रहा हूँ। We'll require other people. कितने बजे खत्म सब होगा तो वो तो मालूम नहीं जब तक होता है We can put that aside for now. Besides, भाई मैं if it's the 300 acting साल बाद grandmaster's यूला वाला assignment, क्वेस्ट कर रहा हूँ। and यूला वाला Amber's the one क्वेस्ट who 300 recommended साल me, बाद स्टोरी I क्वेस्ट। should comply. 300 साल ये देखो Paimon's confused. 300 साल पहले तो गेम भी नहीं आया था 300 साल पहले तो 300 भी साल नहीं पहले आया। एक्चुअली 300 साल पहले। ये देखो मेरे सारे कितने क्वेस्ट पेंडिंग है। पेंडिंग देख रहे हो ये है पेंडिंग क्वेस्ट्स। अरे मेरा स्क्रॉल क्यों खराब हो रहा है बार-बार। इतने सारे क्वेस्ट मेरे को बाकी है करने के लिए। लाइक कंटेंट की कमी नहीं है गाइस। कंटेंट की भर के लाइक ये सारे तो क्वेस्ट कंप्लीट है। ये ला चल रहा ठीक है क्लैशेस भैया। पूरा कंप्लीट हो गया। I am practicing my skills and being my level to 16 गुड भैया। और हाँ कैरेक्टर्स भी लेवल अप करते रहना। लाइक ये देखो कैरेक्टर्स जो इधर है ना इधर सब लेवल अप इसको करते रहना और एसेंशन करते रहना। और अच्छे स्क्वाड्स एंड आर्टिफैक्ट्स भी यूज करना। स्टार के इस पे जितने स्टार्स होंगे उतने अच्छे होंगे। वो तो सिंपल लॉजिक है आपको पता ही। मैक्स है क्या तो ज्यादा स्टार्स वाला ये यूज करना और अगर कुछ दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना। क्या कर रहा हूँ भाई? ये सम भैया जितने बार भी आते हैं ना ऐसे एक बार 2 आंखों वाला इमोजी डालेंगे और फिर चले लाइक मेरे को कभी समझ नहीं आता ये देखने के लिए आते हैं कि चले जाने के लिए करते हैं। नो ऑफेंस ये सुन के शायद वो ऑफेंडेड भी हो जाते हैं। There's something
something we need to clear up first. नहीं वो Otherwise, it'll दिखाना keep चाहते हैं bugging ना us. मैं देख रहा हूँ अभी भी स्ट्रीम So that's still on your अपने mind, आप huh? से Maybe you're the ones who can't let things go. Don't शायद worry. देख रहे There's a हो। time and place for exacting vengeance. Some Besides, I'm not in the mood for any right now. मेरा ना Let's save it for 60 हो later. गया 60 You need to subscribers be in the now. right mood नहीं for वाह हो vengeance. गया I points already have a long list of vengeance to exact. और अच्छा Even if I wanted to begin now, I'd have to start in the right order. Who knows how long it will be before I get to तो you? मेरा 60 है देखो मैं अपना If you have so much subscriber to take देखता care of, wouldn't it just be easier to give us a clean slate? Absolutely not. Stealing my अबे targets, calling me a मैं ruthless कट ruler, कैसे and गया suspecting my uncle. All worthy of vengeance in my eyes. एक साल से वीडियो नहीं But you डाला needn't worry, at least not whilst we're investigating this matter. I'm sure you're familiar with the phrase, a man of moral integrity fears no slanderous attack. If Uncle Schubert didn't commit any wrongdoing, then इतने any पढ़े such लिखे होते investigation तो will अभी prove तक fruitless. मैं PhD तक But कर if he चुका did commit a wrongful act, then he should bear the full punishment. I'm sure you understand. Good. मेरा Now, मैंने there नौ are सौ two key चैनल points that aristocrats attach great importance to. Your manner of speech and your bearing. Let's begin with your manner of speech. Aristocrats have a very unique way of carrying conversation, even with mundane daily topics. one day Oh, मतलब Krimes already learned some मैंने unique 1000 चैनल conversation. सब्सक्राइब करके रखा Mark my words, vengeance vengeance will be mine. अरे vengeance Not ले even लेगी फिर close. से एक और ले And लेगी besides, मत it कर sounds कर strange. Hey, Paimon learned it from you. And didn't you say not to call others strange? It seems you don't respect the rules of your own clan. अभी भी इस कर सकता हूँ No, I've no need to trouble myself with such frivolous formalities. Here, allow me to demonstrate. For example, when Well, greeting a let's do friend, you could say, "As the morning dew greets the coming dawn, so do 20 का I करूँगा greet तो you, my 20 dear नहीं friend." मिलेगा। As the morning dew does what now? However, such a phrase may only be used during the morning hours. Also, the party with whom you're speaking must be of approximately the same status as you. Morning dew is not uncommon, so it expresses that friendship should not be measured by तो value, मेरा लक yet also suggests that friendship between नहीं aristocrats कभी कभी is लक pure अगर like 50 भी water. लूज कर सकते हो 10 विश किया लेकिन 50 पॉइंट्स लूज भी कर सकते हो तो Oh, सीधे no, no, पता no. You must be prudent with your words. Calling someone a हम good यूज friend करने पर could ज्यादा easily मिलता है offend them. But कभी didn't कभी you लूज just भी आता say है कभी my मालूम dear नहीं friend in your वो example? स्ट्रीमलैब्स के एल्गोरिथम है भैया Yes, I did. But you must know StreamLabs in the ने Lawrence कुछ और- family, dear friend is a set phrase that can only be used towards certain friends with whom one is acquainted, but not particularly close. It sounds much more pleasant to call an acquaintance a dear friend. So, another thing to remember. Aristocrats are concerned with face and being polite. However, if you were to use dear friend to address an intimate friend, the recipient would think that you were deliberately trying to estrange them. This is only the first step 45. in making a greeting. After addressing one another, you then exchange courtesies. एक दिन मुद्रा Wait, गई wait. This Courtesy is all too मतलब abstract. Perhaps it would be better if you gave some real-life demonstrations. वाह पाइमन का डेमोंस्ट्रेशंस चाहिए 12 लाइक्स हो गए गाइस ओपी Very well. ये कर Come दो with me. We'll Just- choose some bystanders to converse with. 50 लाइक्स कर दो बस और कुछ नहीं मांग रहा 50 लाइक्स कर दो यार यार प्लीज 50 लाइक्स कर दो और कुछ नहीं चाहिए गाइस 15 लाइक्स कर दो बस और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दो मैं क्या क्या मांग रहा हूँ यार I भाग still जाएंगे have a सब lot to do with the guild. How about you take a rest while I go back? क्राइम्स तो कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा रुक जा गाइस चलो डन तो मैं काम कर रहा था बस और कुछ नहीं Oh, you're
Eula of the Lawrence clan, right? Yes. This can't be good. You there, lowly laborer. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. भाई मेरे Please साथ के acknowledge ऊपर the से जा रहे glory हैं सारे bestowed वर्ड upon thee by the nobility... what comes next? Oh, right. By solemnly kneeling to the ground with utmost sincerity. Huh? I can't make heads or tails of anything you're saying. 78 subscribers. Hold on. जिसने अभी What did they subscribe always किए, teach me? thank you for subscribing. जिसने subscribe किया अभी. Whenever a dispute नाम बोल arises, दो यार. protection नाम of बोल the दो बस. family's भाई prestige नाम and बोल दो, dignity नाम बोल दो always बस. takes precedence. लिख दो चैट लिख दो As a lowly commoner, you shall maintain absolute reverence when speaking with those under which you so graciously चैट toil. पे लिखूंगा ना वही How ना. dare मैं you speak in उससे such a नाम पूछ रहा manner? हूँ. नाम कैसे? Is everyone from the Lawrence clan so strange? मतलब चैट ही पर हाय लिख दो नाम The पता days of the Lawrence clan's tyranny Yes, have हाई long वाई लिख दो, passed. कुछ भी I लिख don't दो care guys. what you're trying to do. Just जिसने be अभी it. सब्सक्राइब किया ना तो हाई वाई लिख दो बस. Like I said, I don't care what you're doing. I have nothing to say to any member of the Lawrence clan. And here's a word of advice. I wouldn't be caught dead walking too closely with any one of their like in Mondstadt. If that's all, I'll be going. I'm afraid I won't be able to control myself if we talk any longer. इन्होंने भी सब्सक्राइब किया है. Don't leave! Halt! Mark ये my बन words. जाते हैं. Vengeance will be mine. Thank you so Wow. भैया for The Lawrence subscribing. name really does carry a terrible reputation. Never mind him. I could have predicted as much. Let's find someone else. चलो बता दो. Let's see. फिर से बेइज्जती ना हो जाए बस. You there, lowly toiler. You stand in the presence of a member of the Toiler. illustrious Lawrence clan. I have यार words for कितना you. पेटटी Please लैंग्वेज है acknowledge यार. the बहुत glory bestowed डिसरेस्पेक्टफुल upon है. ऐसा thee लग रहा by है the कि nobility, जब and हमें solemnly कोई kneel to the ब्रिटिश ground with से utmost रूल करते थे sincerity. तब ऐसा लैंग्वेज Huh? like Why don't you disrespectful. respond? बहुत According to the disrespectful. custom, I must wait until you kneel completely before I can say the next अरे मन words. करता है मुंह तोड़ दूं जो भी बोलता Right. है. I mustn't look at you too long, or I'll be drawing more attention to our Muh difference in tod do. status. Oh dear, I've already stared at you for quite a while. Okay. Fine. मुंह तोड़ोगे तो You खाना may नहीं spare खा yourself the formality of kneeling, as it may be a little inconvenient. मतलब हमें नील I करना shall पड़ेगा continue. क्योंकि हम तो लॉरेंस क्लैन के नहीं है. Wait. यार ये तो There's a डरती line for चीज people है. with rude attitudes in this एक बार कहूँ situation. एक कहूँ Hey, यूला क्या के बोल रहे यूला bothering के me or else I might यूला say के मुंह के something you अंदर wouldn't like दांती to नहीं है. hear. Then again, I've got no words for anyone from the यूला के Lawrence पास clan. दांती नहीं है. Again? लेकिन किसी What's के पास up भी this नहीं है. attitude? Yes, I don't think his attitude will change. If I keep grandstanding like this, the outcome won't be good. Let's try to find someone else to talk to. I'll remember your unwillingness to comply. Mark my words. Vengeance will be आज mine. अगर 80 हो जाए ना तो ओपी होगा. 6 लोग देख रहे हो भाई. 6 लोग देख रहे हो. प्लीज अगर 80 हो जाए ना मैं हैप्पी हो जाऊंगा. इस बच्ची को हैप्पी करने के लिए आपको खाली सब्सक्राइब दबाना. You there, lowly worker. Yeah, I've Lowly already heard it all worker, before. Look, just spare me lowly the time. tailor, Our answer's lowly always फिर the क्या बोला? same. Slave, I've slave. got nothing to say to the likes of you. Only we I mean, stand. seriously, can't you just take a hint? Please calm down. We don't ए want वन to कर cause any लिया. trouble. Whoa, 20. I know she's a knight of Favonius, and that the Lucky. knights wouldn't misplace their trust, but the name Lawrence carries too much weight with it. Even to this very day, आज मेरा the lucky descendants day. of the Lawrence clan are still scheming to reclaim Mondstadt and reinstate their aristocratic rule. And if that wasn't enough, here you are purposefully using their awkward way of speaking just to put on an act? Don't you care for the feelings of us ordinary folk? You have a point. But mark my yes, words, yes, this yes, transgression will not go मेरे unnoticed. नाम के आसपास ये You क्यों आ रहे wanna हो fight? ऑरेंज?
Listen here, I may be no match for you, but I'll be sure to lodge a complaint with the Knights of Favone. I'm sorry, but I want her to understand that I'm serious. तो वो अरे ये है यार, ये मेरे को ट्रैवलर कभी-कभी समझ में नहीं आता यार। ये जब किसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए तब ये प्रोटेक्ट ही नहीं करता। There's no point in quarreling any further. ट्रैवलर कौन है तुम? अरे नहीं कैरेक्टर तो जेनशिन बनाता है ना, स्टोरी में क्या बोलना है क्या करना है वो तो जेनशिन बनाता है। It's all right. कैरेक्टर खाली उसके मूवमेंट्स कंट्रोल कर सकते हो, वो भी अलग-अलग कैरेक्टर। हमारा ट्रैवलर कंट्रोल कर तो सकता है लेकिन इसका स्टोरी कंट्रोल नहीं कर सकता। Actually, Paimon thinks we should apologize for asking you to demonstrate for us. We had no idea the feelings between the Lawrence clan and the people of Mondstadt were so bitter. What can we do? The Lawrence name is already a dirty word among every household in Mondstadt. Even 3-year-olds know the story. I see this kind of attitude all the time. Don't worry. What with me being a knight of Favonius, they're usually willing to speak a few words with me. Perhaps my aristocratic manner of speech provoked them today. Believe me, it's not a big issue. कभी 1 लाख का वो पॉइंट का करेगा, 1 लाख हार गया तो। There's no need for them to direct their anger at you personally. That's the way things are. Perhaps it's just fate for those who have made mistakes. Accepting punishment is only fair, right? But when your family has committed atrocities, I'm afraid there's no easy path to reconciliation. As memories are carried in a steady breeze, the faults of such grievances are passed from one generation to the next. It is now my turn to bear this burden. At least I have a means of living a relatively normal life compared to the elders of my family. I have nothing to be discontented about. काशी के सेंस से करके कोई है जिसने मुझे अभी मैसेज किया। Yeah, why were you so willing to try and demonstrate for us? Oh, that reminds me. That last person will not escape my vengeance either. Let's leave it at that. Just think of it as something I like to do. But unfortunately, you probably didn't learn much from those conversations. It seems we have no other choice but to find more people to talk to. और बेइज्जती नहीं करवानी, नहीं यूला की करवानी है, नहीं हमारी करवानी। लोग सोच रहे हैं कि हम भी लॉरेंस क्लैन के कोई डिसेंडेंट है। Yeah, We'll just have to roll with it for now. Let's just keep Eula from getting anyone else riled up. Well then, I'm glad you learned something. You're already halfway toward mastering aristocratic conduct. Yes. A proper manner of speech is more aesthetic than anything else. It stems from their taste for refinement. But we must also practice your bearing. I have a very effective way of training for this. Come with me to Dragonspine. मेरा तो बहुत अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन अभी जा रहा था क्योंकि मेरे पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या मालूम आजकल दर्द होने लगा है मेरा पीठ कमर से। मालूम इन आप लोग वो शुभम भैया कहाँ गए? अरे मैं ही शुभम भैया हूँ यार, वो आशुतोष। वो कौन है? आशुतोष मेरा छोटा भाई। हाँ तो वो बोलते कि नहीं वो शुभम भैया है। It's so cold. Does aristocrat training really need to be done here? If you wish to truly achieve the dignified conduct of an aristocrat, you must learn to remain composed and elegant even amidst harsh conditions. For example, you can see that part of the path up ahead is quite difficult to traverse. But a well-trained aristocrat would not only effortlessly proceed forward, but do so without a stain on their garment and their elegance fully intact. I think we've left the realm of aristocrats and entered the realm of adventuring. Compared to what we've already seen, this should be a piece of cake. चैट पे कुछ लोग अभी बोले भाई ये आपके साथ जो वीसी पे था ये 1 सेकंड में बच्चे से बड़ा कैसे हो गया? मेरा भाई पड़ गया। नहीं वो You look pretty confident पता this नहीं है time. ना All right, कि let's आप get दोनों एक ही started. अकाउंट यूज करते हो। Remember, you must be graceful and elegant. Don't get knocked or launched into the air. समझ That लो would be सारा most अकाउंट मैंने ही unsightly. बनाया है, वो खेलता है। फ्री फायर से लेकर जितना भी गेम है सबका अकाउंट मैंने बनाया। एक सेकंड रुको
X-ray Uchiha. That won't do. You've exposed your shortcomings. No need to worry. Head back to the starting point and try again. It'll be difficult at first, but the key is to remain patient. Welcome to the stream. Let's try again. X-ray Uchiha. Remember, you must be elegant. Don't get knocked or launched into the air. That won't do. You've exposed your shortcomings. I've never played this game. No need to worry. Oh, this Head is back to the starting Genshin point and try Impact. again. यार आपका रुको एक सेकंड रुको आपका ये ऑन करो नॉइस सप्रेशन ऑन करो but seems fun yes It'll be बहुत फन difficult है at first, but the तो key बहुत is अच्छा to स्टोरी remain लाइन है patient. आप डाउनलोड कर Let's सकते try हो again. अगर आप फोन पे खेलना चाहते हो तो Remember, फोन पे भी you अवेलेबल must है be और elegant. पीसी पे भी Don't अवेलेबल get है knocked or launched into the air. लाइक आपको फोन में 10 GB या फिर 15 GB का पड़ेगा और पीसी पे 32 GB का पड़ेगा और फ्री है लाइक पैसे देने की That कोई won't do. यार You've क्या exposed हो your रहा है यार मैं shortcomings. इसमें बातें It'll be करते करते भूल difficult जा at रहा हूँ first. Remember, ठीक से जा यार क्राइम्स no need to worry. Head back to the starting point and try again. तो गाइस डन है भाई बच गए भाई बच गया भाई बहुत बहुत डरावना है भाई That won't do. अरे You've यार exposed इतना your काम shortcomings. कौन बनाता है ऐसा No need to worry. Head back to the starting point and try again. भाई कि आपको कितने ट्राइज लगे थे भैया करने के लिए ये यूला It'll वाला be difficult at first. एक ही बार में हो Remember, गया you must मेरा तो be नहीं हो elegant. रहा है था वो जो ऑब्स्टिकल्स पार करने वाला कोर्स है वो कैसे किया था लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से किया था अरे क्या है कहीं से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस डैमेज नहीं लेना और वो सब हाँ से तो बच वही ना जाना वही तो मेरा सबसे बड़ा वीकनेस है मैं डैमेज हमेशा लेता हूँ भाई मैं आज डूबने वाला हूँ शायद से मोबाइल से एक तरह से आसान भी होता है क्या मोबाइल से एक तरह से आसान होता है राइट ब्रो हमने वॉक किया था कि कुछ और बीच वाले पे जाना पड़ेगा लिए नहीं है सर जल्दी जा क्राइम्स डन बच गए यार कर लिया Not bad. A lot better than I had anticipated, at least. एक्सरे उचिया बाय द वे अगर आपने अभी स्ट्रीम लाइक नहीं किया तो स्ट्रीम लाइक कर दो और अगर कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा करना है मेरे क्यूट वॉइस के लिए भी कुछ करना है ना तो सब्सक्राइब करो Good thing we didn't get stuck. मैं दोबारा नहीं अरे गया Aristocrats now. Don't flatter yourselves. We've आशुतोष only भैया just begun. This scenario was relatively simple. आशुतोष की आशुतोष In the face of a real battle, one would seldom have a chance to stop and evaluate the situation. There's a ley line monolith just up ahead that will attract nearby monsters. True elegance is the ability to calmly yet swiftly make decisions in the heat of battle. Oh. My family set only the highest expectations for me, even as a child. Let's proceed, shall we? Yes, let's go. Let's go. This is the ley line monolith. Go ahead, activate it. But be careful not to get launched into the air or frozen while fighting. That would be most unsightly. Huh?
भाई साहब ये तो एक ही ट्राई में कर लिया. Well done. Your performance was most impressive. Good work. And you managed to remain calm even in these grueling dragon spine surroundings. I'm starting to wonder if even I could have done the same. Given such an outstanding performance, it seems there is little left for me to teach you. Like Paimon said, adventuring is our specialty. 79 subscribers. Thank you. Let's hit 80 today. Then let's get out of Dragon's Please, Spine before Paimon just turns into a popsicle. one more subscriber. Hold on. I Thank was you, commending the X-Ray Uchiha, traveler's for performance just subscribing. now. Hold on for You, 1 on the second. other hand, seem to have made no progress at all. What? You mean Paimon was also part of the training? Yes, of course. You were frantically flying and dashing about throughout the entire thing. Not an elegant sight at all. Did you even listen to anything I was trying to teach you? यार ये तो बहुत गंदी है यार टीमला. Hello G-Flux Gaming, welcome to the stream. बहुत दिनों के बाद सब्सक्राइबर G-Flux Gaming सब्सक्राइब तो चैनल हैं? Okay, I gotta go. Bye. But thanks for tuning in, X-Ray Uchiha. Bye bye. Acha, maybe the weather is too cold. Yeah, that's it. It's too cold here. Besides, Paimon was paying attention to the traveler. Whatever the reason, not heeding my instructions, a cause for vengeance, perhaps. Now, drink this. Huh? What is it? Are you trying to poison Paimon? Certainly not. It's warm milk. Didn't you just say that you were freezing? Drink it and it'll help warm you up. वार्ड मिल कहाँ से मिला भाई? Thank you. वार्ड मिल कहाँ से मिला इसको? मेरे को डाउट हो रहा है. The whole vengeance thing? If I wasn't, then why would I care about you being cold? If you turned into a Paimon popsicle, that would ruin my plans for vengeance now, wouldn't it? So, dear friend, don't die on me out here. Ah! Paimon knew something was off. All in the name of vengeance. No need to thank me. Now then, given that your training is complete, it's time we return to Mondstadt. Our last step will be preparing a cordial gift to present to my uncle when you meet him. I already have something in mind. Let's pay Sarah a visit at Good Hunter. Guess we can rest a bit. और फिर से वो बैक पेन हो रहा है मेरा. टायर्ड भाई. ये इतना गंदा होता है ना. Listen, as long as you stick to your own path, it doesn't matter what Mother Nature throws at you. चलो अभी ट्रीट टाइम है. एक सेकंड रुक जाओ. या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी शायद. Oh, hey Eula. I see you've met the honorary knight. यार जो भी मैं अगर फेस कैम होता ना तो दिखता आपको मैं अभी क्या कर रहा हूँ. मैं अभी खड़ा होके थोड़ा से अपसाइड डाउन कर रहा हूँ. दर्द होता है ना आजकल गाइस. We meet again, Amber. Seems we're just bound to run into you शायद these डॉक्टर days. को दिखाना पड़ेगा मुझे. Well, I just got back and was thinking about grabbing a bite at Good Hunter. But now that you're here, why don't we all eat together? Very well.
It's been some time since we last shared a meal together. Come, take a seat. We can discuss my uncle's gift while we eat. Yes? Is there something else you'd like to order? Could you please prepare a serving of my uncle's favorite, gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? We'll take it as a gift to him later. Coming right up. It'll take some time to prepare. I'll have it here at the counter once it's ready. Hold on a moment. Is this satisfying salad also something that Amber ordered? No, she didn't order it. But because she didn't order any vegetables, I thought I'd throw in a salad on the house. You know, to contrast all the meat dishes. So, we clearly didn't order this, yet you prepared it without authorization. Mark my words, this transgression will not go unnoticed. Revenge on her for giving us a free salad? एक और You should know me by ना now. मैं अभी क्या That's करने the वाला kind of पता है villainous character I am. अभी मैं करने वाला Well then, एक चीज आपको दिखाऊंगा वीडियो please wait a दिखाऊंगा moment while I get the dish for your uncle started. है ना गाइस Delicious unauthorized मैं आपको एक बहुत delicacies. अच्छी चीज Sarah दिखाऊंगा will pay for this. Why would you choose gebratenes Fleisch mit Sauerkraut as a gift for your uncle? Hyman's never even heard that dish before. गाइस स्ट्रीम This एलिमेंट dish isn't actually on Good Hunter's menu. ये बात Only निकाल रहा long-standing अभी patrons such as my uncle would know about the dish. The old aristocrats seem to take a liking to it. Because of the sour flavor of the sauerkraut, एक और not too सब्सक्राइब many कर दो people are fond of it these फोर days. फोर I guess वाचिंग है it's भाई become एक less जस्ट एक और popular over time. सब्सक्राइब कर दो You treated me to the dish once, and I couldn't even finish a bite. I've nicknamed it gebratenes Fleisch mit Vengeance ever since. आपको उसमें आप I never expected us to have such completely different tastes in दो food. बस If I weren't in such a good mood, I'd say that constitutes grounds for transgression. वो चीज क्या है? वो चीज में वो तो सरप्राइज है ना एक और सब्सक्राइब Of मिलेगा course तभी मैं not. वो It's hard to find someone in सरप्राइज Mondstadt रिवील that करूँ attracts contempt as much as she does. Yeah, bet. It's fine when you're just joking between us, but I'm afraid our honorary knight might misunderstand you. Eula's always talking about vengeance, but that's just how she is. It's nothing you should take too seriously. But I am serious, and I'll remember every transgression committed against me. Ugh, it's no wonder so many people dislike you. Hyman's starting to realize that Eula is actually a very good person. There's no need to be so awkward when you want to say something nice. Listen, you've never been labeled as a social pariah, have you? Well, no? So that's why you wouldn't understand how hard it is for a bad person to try to be good. It's impossible for me, and I have no intention of acting like a good person. All right, no need to look so sullen. I'm just kidding. Come on, let's eat. The food is getting cold. कुछ तो है भाई Oh, I'm stuffed. I'll see Sarah about the bill. No need. I've left the mora under the plate. If you try to settle it with her in person, she won't accept payment for the salad. Don't underestimate my ability to exact revenge. Sarah won't get the upper hand this time. All right, next you should pay my uncle a visit. He has a small camp at the top of the mountain near Springvale. He usually whiles his time away there when there's nothing else to do. तो खिचड़ी पका Aren't you दे coming with us, Eula? I'm afraid that wouldn't be very convenient for me. It'd be better if you two went alone. Ah, yes. Please do remember to pick up the dish from Sarah. I still have more recon to do in the wilderness. Well, until next time. Let's meet again. What an interesting bunch you are. अब इसके अंकल के पास चलते हैं Post an expedition at the Adventurers Guild. ओ इसके पास पहले ले तो लेते हैं सारा Here, the gebratenes Fleisch mit Sauerkraut is ready to go. Be sure to eat it while it's hot. Otherwise, the flavor will be spoiled. And by the way, don't worry too much when Eula says strange things. She's actually a very good person. Hyman's been meaning to ask. No one could stand the sight of Eula when she was trying to speak with the others in Mondstadt earlier.
But she seemed to get along fine with you and Amber just now. What's up with that? The people of Mondstadt don't take kindly to anyone bearing the Lawrence name. They are unable to see past her family, therefore they don't actually see Eula for herself. So no matter what Eula tries to do, it's seen as a wrongdoing. It essentially strips the meaning of anything she tries to accomplish. भैया आप मुझे ये बात बताओ कि आपका जो ये आंखें दिखाने वाला जो इमोजी है इसका मतलब क्या है? आप बोलना चाहते हो कि आप देख रहे हो कि आप बोलना चाहते हो कि कुछ गड़बड़ है कि कुछ ये सुबह में या नहीं मैंने बोला शाम भैया मेरे चैट पे How come you're able to see Eula differently then? Well, when she joined the Knights of Favonius, it caused quite an uproar. 80 Many people signed a petition demanding that the Knights reverse their decision. At the same time, numerous members of the Lawrence clan crowded the entrance of the Knights of Favonius headquarters, clamoring for Eula to give an explanation. Oh, so both sides were unhappy. That's right. So you can imagine how determined Eula must have been under such circumstances. But thanks to Grandmaster Varka and the unwavering attitudes of others in the Knights of Favonius, they were able to quell the unrest. Tensions still remain beneath the surface, I'm afraid. In the eyes of the people, she's a stain on the Knights of Favonius. And in the eyes of the Lawrence clan, she's a disgrace to her family. But she simply fulfills her duty as a knight, silently helping one person after another, myself included. People like Eula should be approached with care and understanding. She could stand to be. I believe a day will come when things will get better. I'm glad. Take care. Please come again. अब सरप्राइज टाइम गाइस सरप्राइज टाइम और ना गाइस जो मैं करने वाला हूँ वो शायद से आप लोग थोड़ा सा लाइक कैसे लगेगा लेकिन मालूम नहीं बहुत अच्छा सरप्राइज ओके ना गाइस Join the community of more than 2 million Binonists. भाई साहब भाई ऐड चला है ये ऐड है लिटरली ऐड चला अभी मेरा इन लग जाते हैं अभी मेरे चैनल के अब जो मुझे करना पड़ेगा वो है मुझे एक और विंडो बनाना है ओके ना और विंडो बन गया अच्छा गिवअवे टाइम नहीं ये गिवअवे से भी बहुत अच्छा है ठीक है ना एक सेकंड रुक जा आपको एक चीज देखने को मिलेगा वो देखो आप ब्लैक स्क्रीन उसके लिए ब्लैक स्क्रीन लगेगा ही है ना गाइस विंडो कैप्चर एंड तो ये ना होना चाहिए ये फुल स्क्रीन हो जाता है ना अभी आपको देखने को मिलेगा है ना इनका हो गया oh sucks not get almost okay in 3 2 and 1 let's in 3 2 and 1 let's go guys Rickroll लेकिन जो प्लान किया था वो हुआ नहीं है I'm a very bad streamer guys मैंने प्लान किया था कि रिकरोल दिखाऊंगा फिर मेरे को पता चला कि हाँ अगर कॉपीराइट आ गया तो लग जाएंगे फिर मैंने सोचा कि नहीं पहला थोड़ा सा क्लिप सेकंड्स दिखा देता हूँ फिर उनको लगेगा कि हाँ रिकरोल हो गया मेरे साथ तो वही किया लेकिन थोड़ा सा लैग कर गया इसके बीच में तो मिशन फेल बेटर लक नेक्स्ट टाइम स्ट्रीम ऑफ क्या हो रहा है भाई क्या हो रहा है बहुत गुड कर पाया
मेरे से नहीं हो पाया ये अगर मैं कर देता ना तो सब लोग मेरे को अभी अनसब्सक्राइब कर देते, वो अलग बात है। हाँ मुझे जो करना है वो है अभी तो अब हमें जाना है वार्ता के पास। गधे क्राइम्स मैंने क्यों दबा दिया? मत ले ली। सब भी गुस्सा होकर चले गए शायद। इनका कोई रिएक्शन ही नहीं है यार। ये सब प्री प्लान करके रखना चाहिए। 100 सब्सक्राइबर्स पे ऐसा कुछ करेगा तो प्री प्लान रहेगा। आज की The tent seems to be pretty tattered, but there's a really fancy chair. Could this be an aristocratic custom? Ah, it's you again. I thought I had rid myself of you two. Magnanimous. Yes, indeed. जो मुझे समझ में नहीं आएगा गाइस, देखो जो मुझे और आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को समझ में आएगा जो इंग्लिश पे बोले मास्टर कोर्स करके रखो, लेकिन जो समझ में नहीं आएगा ना वो ही हमें खाली क्लिक करते जाना है, ये वो इंप्रेस होता जाएगा। हाँ ये ज्यादा कूल है। It appears I have misjudged you. Supreme brilliance. मैंने यही चीज The glory नोटिस of the किया, nobility that continues to this day. A true loyalist. Impressive. My intentions were to test your humility. It appears you have become well versed in our etiquette. Oh, so he was testing us. Sheesh, what an ordeal. Your conduct is satisfactory. I must say, such progress in such a short time is practically unfathomable. If I may ask, from whence did you learn such a civilized manner of speech? Ah, good. Very good. You are bright, and compared with the common folk of Mondstadt, you certainly have potential. If you were of aristocratic blood, your prospects would be promising indeed. By the way, we brought a gift. Paimon means we would like to present you with a small token of our goodwill. भाई पाइमोन का भी इंग्लिश This be? Gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? Yes. It's evident that your sentiment is genuine. As a young person nowadays, only with no small effort could you achieve such a dish. It's been so long since I dug into a big, tasty... I beg your pardon. What I mean to say is, since it's nearly mealtime, I shall partake. पता हो इतना बड़ा ये क्यों नहीं काटते? इसको हैंडसम दिखने के लिए लगता तो नहीं है, हैंडसम तो बिल्कुल नहीं लगता। Aroma, just as I remember it, and this exquisite sour flavor. A delicacy that only us noblemen and women could appreciate. Now even Paimon's starting to wonder what it tastes like. I acknowledge your genuine goodwill. Such sincerity must certainly imply that you come bearing a request. Wait, so you've come to know of this, too? It was meant to be a family secret. हाँ, मैं इसको शानपट्टी लगा रहा हूँ जिससे इसका सीक्रेट मिल जाए, फिर हम रिवील करें। And the Knights of the Favonius, the Knights of the Favonius, which was established by the Varka. Please, come with me. We happen to be in need of competent fellows like yourself. To see some friends from a distant land. They have offered their assistance in restoring the Lawrence clan to its former glory.
फटुई है क्योंकि फ्रेंड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड मतलब और इसका माइंड प्योर इविल है भाई, बहुत खतरनाक है मेरे को लगता है। मतलब वो लाइक वो जो हमारे ना ये होते थे ना Well then, let's get going, shall we? You'll understand everything in due course. तो मेरे को लगता है इससे माइंड प्योर इविल है। फटुई होगा, फटुई है, हाँ फटुई है। पाइमॉन को भी शक है फटुई है। यार क्या टट्टी चीज हो रहा है यार मेरे साथ। इसके बाद वैलोरेंट खेलेंगे ओके ना गाइस, ये क्वेस्ट होने के बाद, क्योंकि इसके बाद कोई क्वेस्ट बचा ही नहीं है। इसको मारने का कोई जरूरत तो नहीं है बिकॉज़ फ्लाइंग के लिए तो मार ही देंगे इसको। कितना लेवल चाहिए? 59। हाइड्रो एंड ये क्यों सारे इलेक्ट्रो मॉन्स्टर्स होंगे क्या? ये वाले Something's come up. Let's see guys, let's see. Guys आज रात को भी स्ट्रीम होगा ओके ना? क्योंकि मैं आज ज्यादा लंबा स्ट्रीम नहीं हो सकता। एक्चुअली ये लैपटॉप पे मेरे मामू के भी आएंगे अभी, तो उनको लाइक वो चलाते हैं, तो इस वजह से उनके साथ थोड़ा लाइक खेलूंगा और बस। Even if they are powerful, our status is much higher than theirs in the land of Mondstadt. रात को होगा, रात को ये होगी आज। वेनम भैया अवेलेबल है और ऊपर से आज शायद से मेरा पीठ का दर्द। Therefore, we shouldn't allow them to admire our true faces so सजेशंस easily. कि मैं अपने कमर दर्द कैसे ठीक करूं, मेरा बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन। It's possible like Let's proceed, shall we? I'll introduce you as my guest. Constant pain में जा रहा है। चलो गाइस। As you'll see in a moment, there are many already helping us. I heard that this area had already been purged once by the Knights of Favonius, but it's the only place around Mondstadt that is well concealed and spacious enough. Although it has fallen into disrepair and does not suit the tastes of the nobility, we simply have to make do for now. Sorry, can we walk any faster? Of course not. An aristocrat always moves with grace in his steps. Moving hurriedly is unacceptable. पामो ज़्यादा बात मत करना तू। तेरे को जो बोल रहा है उस सुन बस, और मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। Stop sitting in the same position for more than 30 minutes. More than 30 minutes में नहीं, मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, मेरे पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। कल रेस्ट किया था, उसके पहले रेस्ट किया था, रेस्ट करने से भी लाइक ठीक हो रहा है। फिर जैसे मैं फिर से अपने चेयर पे बैठ रहा हूँ, फिर से दर्द शुरू हो रहा है। Hold it right there. ऊपर से मैं पहले कुशन्स नहीं लगाता था, आज कुशन्स भी लगा के बैठ रहा हूँ। If you really must know, they're my Hello? guests. If you happen to offend them in even the slightest, then you will be held accountable by the Lawrence clan. But this matter is of secrecy. We must exercise caution. You dare question the ways of a nobleman? I don't have time for this. No need to sound all high and mighty like that. तो अपने Fine. You may proceed. अपने पैर पर रखो, मैं भी तो वैसे ही चलता हूँ। हाँ, लेकिन गेमिंग लैपटॉप से अपने अगर पैर के ऊपर रखोगे आपके पैर जल जाएंगे, बहुत गर्मी होगी। जब ये चलेगा ना, बोल सकते हो 60-70 डिग्री सेल्सियस जाता है गेमिंग लैपटॉप के अंदर। आपके पैर जल जाएंगे लिटरली। We could determine a person's fate with the अच्छा blink of an eye. उसके ऊपर कुछ और लगा लेना, जैसे हो जाएगा कुछ मोटा कपड़ा। Then which you are saying in both isn't right. Did it right for student long term में problem देगा। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ।
है छोटे चेयर पे बैठना पड़ेगा क्योंकि यही मानूंगी चेयर पे बैठना ही बंद कर दो नहीं तो प्रॉब्लम होगा आगे जाकर नहीं चेयर पे मैं बहुत ये होता है भैया लाइक मेरे को स्टडीज की चेयर पे बैठना पड़ता है इनफैक्ट मेरा स्कूल स्टार्ट होने वाला है स्कूल पे मेरे को बेंच पे बैठना पड़ेगा तो बेंच तो ठीक है लेकिन अरे बेंच पे पोस्चर तो सेम ही होने वाला है ना Our plans are strictly confidential. It's not wise to bring in an outsider at this time. Furthermore, there's been word that an outlander who joined the Knights of Favonius has been very active in Mondstadt recently. चेक करवाने जाओगे डॉक्टर यही कहेंगे Besides, my guest is well versed in the etiquette of the nobility. I must treat them with the proper mutual respect. The Knights of Favonius pay no regard to such details. They could never understand the intricacies of our etiquette. And what about this? अच्छा तो एक आता नहीं कंप्यूटर के लिए एक अच्छा सा चेयर गेमिंग चेयर है तुम्हारे पास Question my word. Need I remind you who it is who has made your activity in Mondstadt possible? Without the support of the Lawrence clan, you would have all been driven out by the Knights of Favonius like dogs. You must immediately offer your sincerest apologies to my friend. You've offended their honor. Fine. I'll take your word and make no further inquiries. Now, to the matter at hand. Did you bring the diagram of Mondstadt's defenses as promised? So we have diagram. What's going on here? Yes, of course. Here it is. Let me see. Why is it so poorly drawn? Everything's so squiggly and crooked. And what is this shape supposed to be? Excuse me. I'll have you know that I went to great lengths to carefully draw this map by hand myself. That shape is the symbol of the Knights of Favonius. I see. Crude, but I can make do. Are you able to verify that this is all reliable information? Of course, you needn't worry about that. Don't forget what we agreed upon. The flag of the Lawrence clan will fly above the Knights of Favonius headquarters. The rights to that building, as well as the whole of Mondstadt, belong to the Lawrence clan. Yes, we will both profit from this agreement. There's no use haggling over the details. पागल है भाई ये बंदा पागल है इसको सच में समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पावर में आ गए तो फटुई इनको रहने ही नहीं देगा भाई पूरा मॉन्स्टर फटुई के अंदर में होगा Don't worry, this matter is only between you and I and my new friend here. No one else will know of it. Once this is over, I shall stand atop the Favonius headquarters and rebuke their pathetic rule over Mondstadt. Then, the city and all its people will once again be under the rightful and unwavering rule of the Lawrence clan. Perfect. Just as it once was, and just as it should be. क्या कर रहे हो भैया Minecraft May I remind you once आपका थोड़ा सा ये करो लाइक नॉइस सप्रेशन ऑन करो वरना मेरा वॉइस इको हो रहा है That is all. For now. Very well. Minecraft में खेल रहा हूँ वो क्या नाम है What are you doing? ओसन मॉन्यूमेंट को सुखा रहा हूँ That's right. अब ठीक है आवाज And their trusty companion Paimon. We're here to crush your evil schemes into dust. Dust. And breath नहीं breath नहीं I think they got message So this was all just a ploy to deceive me? Yes. It's your own fault. Who would put so much trust in someone based purely on their manners? After so much planning, this is how it ends? Huh. We'll see about that. Just as I expected. I knew I should have never trusted these foolish aristocrats. No matter, we already have the intel we need. किधर जाएगी यार देख रहे हो ये ट्रैवलर गधा है इसको फटवी के पास पहले जाना चाहिए था Paimon remembers that this place is a dead end. Let's take care of the Fatui first and then deal with Schubert later.
Looks like I went too far. हाँ ऐसा नहीं है मेरे 80 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मेरे को और सब्सक्राइबर चाहिए नहीं है वो अलग बात है सब्सक्राइबर मुझे अभी भी चाहिए लेकिन आज के लिए 80 ठीक है अगर आपको फिर भी सब्सक्राइब करने की चुल है तो आप कर सकते मेरी रिवॉर्ड भी अच्छा हाँ ये मोटू मार कैसे रहा है तेरी इतनी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की ऐसा मत सोचो गाइस कि मैं एक जगह सब्सक्राइब हो गया एक बार सब्सक्राइब 80 सब्सक्राइबर हो गए तो मुझे और सब्सक्राइबर चाहिए नहीं अभी हमें 1K भी हिट करना है बहुत हाँ वो तो बहुत टाइम है लेकिन एक सब्सक्राइबर सी 1K हिट होगा Don't touch me! Get out of my way! I'll leave on my own! It seems we finally caught up with you. This place is crawling with Fatui. Oh, it's you. It seems your investigation went well. Aha! I see now. So you're the one that taught them our etiquette. And I thought you despised such pleasantries. Furthermore, there is a rule in our family. Such traditions are never to be taught to outsiders. Ah, yes. Rings a bell. So what? I had no reason not to teach them. You have brought shame to our family and ruined my plans. It's all for naught now. I know that you poured great efforts into these plans, Uncle. But you were well aware that it was not the right thing to do. As a Knight of Favonius, I could not overlook your actions. Knight of Favonius? Let's get one thing straight. I am your uncle, and you are a member of the Lawrence clan. You should strive to restore your family's glory. You still have a chance. Defeat every Knight of Favonius here, and leave with me. Then I shall plead with the family to spare you, and give you a new beginning. So just to be clear, you want a Knight of Favonius to attack the Knights of Favonius? I shall say this one last time. You are not a Knight of Favonius. You are a descendant of the Lawrence clan. The blood of the Lawrence clan flows in your veins. You must comply with the will of the family. Since when have I ever complied with the will of the family? Why, you unruly maid! If anyone should be angry, it should be me. As a member of the Lawrence clan, you knowingly plotted against the city of Mondstadt and threatened its safety. Had you ever stopped to consider the trouble it would bring to so many people? Had you considered how many enemies you would make trying to keep the plans under wraps? You dare lecture me? That's right. In the name of the family that you so dearly revere, Uncle Schubert. I've never experienced the age of glory you always speak of. And I've never understood our family's incessant pursuit of it. But I am capable of discerning right from wrong. And I deeply understand what freedom means to the people of Mondstadt. The Lawrence clan should never and will never become what you've dreamed it to be. Oh, the disgrace of it all! How could such a rebellious monster emerge from our own family? That's enough fuss for today. You two, take him away. The honorary knight and I have other matters to attend to. Given that you've already taken action, I assume you've come across some conclusive evidence? Ivan took a peek at their diagram. Your uncle had mapped out all of the Knight's patrol routes and marked out key information about Mondstadt. And there was me thinking that he was just another elder of the family. And a lazy one at that. I never suspected he could stoop this low. So stubborn. Mark my words, vengeance will be mine. Let's discuss this later. Our first priority is recovering that diagram. Actually ना ये जो बोलते हैं ना vengeance will be mine ये actually यूला ने नहीं बोला है जो बोलता है ना यूला खेलने को मिल रहा है हमें guys यूला खेलने को मिल रहा है
देखो रुको, लिटरली देखो गाइस, इसको बोलते हैं लेजेंडरी ट्रैवलर, एक्सेप्ट कर लेना। ओके ओके, ये देखो मैं अभी खेल रहा हूँ ये यूला इतने लेवल पे 2.6, ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं बोलूँगा कि हैक क्राइम्स यूजिंग हैक्स, चलो कल का तुमने लिए हुआ गाइस। एक्सेप्ट करना है ना आपका, कैंसिल रुको कर लूंगा मैं ये। एक्चुअली अभी डोमेन कंप्लीट करना पड़ेगा ना, कर ले मैं डोमेन कंप्लीट करने के बाद व्हाट द फक, ये क्या है? Guess I got my comeuppance. व्हाट द हेल, मैंने अभी क्या किया यार? ये मेरे को पता ही नहीं चला ये कौन सा ऐसे कुछ चीज होता है। नहीं हो गया लूला का हेल्थ चला गया। ओके भैया, ओके भैया। Beg for mercy. यार बंद हो जा, बंद कैसे होगा? ये बंद कैसे होता है? ओह शायद से ये करने को, सॉरी काया का होगा क्या? ओह हाँ काया से होगा गाइस, काया को पहले पास में। They're here! Stop them! ये जो इसका स्लैश का हीलर क्यों नहीं है टीम में? हीलर रख। ओके ओके हीलर, अरे नहीं हीलर टीम मैं करूंगा अभी, रुको मैं हीलर टीम में एक रखूंगा। मैं अभी फोकस ही अभी मैं एक्चुअली बीच में तो खेल ही नहीं रहा था ना, इस वजह से अभी मैं खाली क्वेस्ट में जितने भी क्वेस्ट है इसके बीच में वो पहले कर लेता हूँ, फिर टीम पे जब क्वेस्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं टीम पे ऊपर फोकस करूंगा। ये क्या हुआ? Retribution! Put your back into it! मोटे निकल इधर से। Fulfill my duty this time. It is time for breaking. क्राइम्स तुम्हारे पास कौन सा हीलर है? बहुत टाइप के हीलर है। Do this quickly. बेनेट है। हाँ बेनेट है, फिर बारबरा है, फिर क्या है? मैंने वो मारा डेमो किया। अच्छा तो चीची नहीं, कोई 5 स्टार कैरेक्टर कौन सा है? गाइस एक करें क्या? बोलो गाइस, आप बोलो। मेरे पास दो ये क्या फेट एक होता है ना, अपॉइंटेड फेट, इंटरबाइंडेड नहीं, क्या फेट होता है यार? ये देखो, ये नहीं ये देखो, ये एक है मेरे पास, कर दूं? चलो कर। लेट्स सी कुछ नहीं निकलेगा। हाँ पता ही था, मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। मेरे को लगा कि एक्सपेक्ट के लिए बहुत कुछ है। अच्छा चलो ये एक चीज पुल कर लेता हूँ ना। नहीं कोई और गेम खेल रहे हो क्या? हाँ कोई खेल रहे हो? जेंशन इम्पैक्ट खेल रहे हो या कोई और गेम? जेंशिन ही खेल रहा है। मैं कहते लाइव देख नहीं रहा हूँ ये। एक्चुअली मुझे एनिमो कोई कैरेक्टर चाहिए ही नहीं है मेरे को। अगर ये कामी सबको मिल गया तो अच्छा होना, ये नहीं चाहिए। मैं तो आया के लिए पुल करने वाला हूँ। हाँ अच्छा। Decided by destiny. Good grief. Eye for an eye. Send this quickly. This isn't good. बेनेट ट्रक बेस्ट है गेम में। ओके बेनेट ट्रक लो।
सीन है। नहीं सीन है का नहीं यूला लाइक उसका डैमेज तो ठीक है, लेकिन उसका जो एलिमेंट है क्रायो वो एलिमेंट कुछ है ही नहीं उसको, लाइक बहुत मुश्किल है। एक काया जैसे कुछ करता है वैसा वो नहीं करता, वो उसका खाली क्रायो जो है अरे या फिर मेरे को पता नहीं कैसे खेलता है यूला। तुम जानते नहीं इसका मतलब कितना होता है अटैक डैमेज? हाँ अटैक डैमेज अच्छा होता बोला ना, लेकिन एलिमेंटल बर्स्ट चला गया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इसका मिलियन तक जा सकता है, 2 मिलियन तक। क्या यूला? अटैक डैमेज तब क्या हैं? 2 मिलियन तक अटैक डैमेज। मैंने ट्रैक टीम में यूला फिजिकल है। हाँ यूला फिजिकल है, वही ना बोल रहा हूँ। उसका एलिमेंट जो है ना वो उतना वो चैनलाइज नहीं करता, इसी वजह से मैंने अभी किया ना यूला को जो लाइक ये करके ई दबा के, लेकिन वो नहीं हुआ। खाली फिजिकल बहुत अच्छा है, एलिमेंट वाला अच्छा नहीं है। अब ओ मैं क्या आ गया यार, मैं बात कर रहा हूँ। More speed. अच्छा ऊपर वाला दरवाजा कहाँ से खुलेगा? इतना बड़ा कौन बनाता है भाई? ये लॉरेंस क्लैन का शायद से मैंशन है। हाँ ये लॉरेंस क्लैन का। More speed. यार इसका वो कहाँ है? उस तरफ है क्या? ओ हाँ वो उस तरफ है। क्या है? ओ ये यूला का ये करने के लिए। यार मुझे पहले ये बताओ ये कहाँ से खुलेगा? मुझे अभी जाना कहाँ है? 3 गेट होता है मेरे ख्याल से। तीनों वहाँ है। तो तीनों में जाओगे ना तो अलग अलग खुलेगा, जैसे क्रायो अलग अलग रहता है एलिमेंट। हाँ। वो जो अबे वो क्रायो वाली चीज है सामने लिफ्ट में जा। हाँ वही तो क्या नाम होता है उसका? अरे सामने नहीं है, लिफ्ट में, वहाँ पर लिफ्ट ऊपर नीचे नहीं होता है। अरे हाँ उधर ही लगो, इधर घूमो, इधर थोड़ा सा इधर ये वाला क्या सामने मेरा? उधर पीछे नहीं ये है नहीं यहाँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। सब जगह चेक करो भाई, सभी जगह चेक कर रहा हूँ। More speed. इस तरफ है क्या? नहीं इस तरफ आया इधर। More speed. तुम्हारे तरफ 2 रास्ता है ना, आगे और पीछे। हाँ नहीं उल्टा साइड। हाँ इधर वहाँ पर एक क्रायो वाला दिख रहा है ना, वैसा ही पीछे भी शायद होगा क्रायो वाला ना। नहीं पीछे नहीं है, पीछे से मैं उधर से आया था। जहाँ पर एलिमेंट है तुम्हारे। अरे उधर नहीं है, तुम्हारे चीज के पास जा, क्रायो वाली चीज के। हाँ इधर कौन सी साइड है? उस साइड उस चीज के पास जाने को बोलते हैं। उसके सामने लिफ्ट है, ये देखते हैं। मिल गया। अरे नहीं मिल गया मुझे। वो स्ट्रीम थोड़ा सा डीले है। ओहो रुको मैं देखता हूँ। थैंक यू सम भैया।
That's where they put the diagram. इसीलिए मुझे लगा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो स्ट्रीम बहुत जा रही है क्या बोल रहा? स्ट्रीम बहुत जा रही है हाँ नहीं बहुत ज्यादा क्योंकि मैंने ये नहीं किया है ना ना कुछ तरीका होता है जिससे स्ट्रीम डिले नहीं हो Retribution. यार चल भी चाहिए ना तुझे चैट भी डिले है अरे वो डिले नहीं है उसको एक ये होता है फ्रीज क्या होता है उसका नाम अरे एक तरीका होता है वहाँ पर स्पीड ना 2x कर दो हो जाएगा लेटेंसी हाँ लेटेंसी नहीं लेटेंसी मैंने कम करके रखा है ना हाँ लेटेंसी के ऊपर डिपेंड करता है With sword comes shadow. This is trouble. This must be it. They may very well have already made a copy of it. मैं तुमसे आधे But घंटे में without my uncle as their मिलता हूँ puppet, there'd be no use in them attacking the city. कुछ काम है कुछ लेने जाना है बाहर ओके The Fatui wouldn't have relied only on your uncle. True. But if their plan had hinged purely on taking Mondstadt by force, as opposed to with the help of a puppet, they could have spared themselves the trouble. The Fatui are dishonest, but they wouldn't go as far as to start an open war. Their opposition wouldn't just be Mondstadt alone. Anyway, I'll inform the acting Grandmaster. She'll know how to handle things from here. अच्छा सम भैया आप क्रिक्स प्लेस को तो जानते ही हो ना? आप उनकी शीप में रहते हो ना? मेरे को लगता है। Yeah, about that. Because you stole my targets by attacking the Fatui I'd been tracking earlier. I came to exact my vengeance. You tried to do my job for me, and I'm here to return the favor. Finally, after all this time, Paimon understands what you're saying. In reality, you sensed that something might happen to us during our investigation. You were worried about us and your uncle, so you brought a team to take a look. My purpose was vengeance. Don't twist the story. You don't look too bright, but it turns out you have a knack for scheming. And mark my words, I'll remember that. Hey, what do you mean Paimon तो अभी doesn't remember look too करना bright? पड़ता है। You have seeded उसका a ब्रेन deep खोल के enmity देखेंगे तो between दिखेगा us. कि इतना Just you ब्रह्मांड है। wait. उस ब्रेन के जो Even if you नॉलेज were है to be उसको ही वो completely एनर्जी destroyed, में I would कन्वर्ट never करती है forget इसी you. वजह से उसका इतना ज्यादा फिजिकल डैमेज है Bring it लॉजिक on! देख रहे हो I like your fighting spirit. I'll take this diagram back to the Knights of Favonius and take it from here. Sure. Well, see you around. That you will. And make sure not to steal my targets next time. स्पिरिट अपने टारगेट स्टील किया है थोड़ी पता तो वो क्वेस्ट तुम्हें मिला है हमें लगा कि हम अपना प्रोटेक्ट करने गए 20,000 हो गया भाई 15,000 का ये था 20,000 हो गया 60 प्रीमोजेंट्स चलो कितने हो गए अब देख 97 पीटी देख लेता हूँ कितने होने वाले पॉइंट्स क्या चलिए हमने 6 12 18 9 पे हो हाँ हाँ कर रहा हूँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कर रहा हूँ एक्सेप्ट करने कर रहा हूँ
फ्रेंड्स के अंदर आपकी पूछता ही है मुझे समथिंग 56 है आपका वाह वेरी वेरी गुड वेरी 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 गुड इंफॉर्मेशन आपके कैरेक्टर्स क्यों नहीं लिख दिया इधर कैरेक्टर्स होल्ड ऑन अ मोमेंट चाइल्ड का ऐसे दिखता है भाई कैसे इमोजी वाला कैसे लग रहा है देखने में ना तो अगर मैं इधर अपना वर्ल्ड लेवल डिवाइड कर दूं तो क्या होगा केस नहीं लिया यार मैं आपके कोई दिन में ये चेक करने के लिए टेस्ट ले लिया करते इसके लिए मैं एक चीज खुद से टाइप करना चाहता हूँ साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे आपसे हो यार कैसे करते हैं भैया ये क्या कर रहा हूँ मैं भैया ये क्या कर रहा हूँ Quake! I will have order. वो आपके पास जॉन्गली है वाह अच्छा मेरे लिए एक आपको हेल्प करनी पड़ेगी मुझे आपको एक आपको मुझे एक हेल्प मेरे से मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए आई नीड योर हेल्प सर राइट टू रेजिस्टेंस मिलता है ना नहीं आज कॉस्टेड ऑल्टर मिलता है नहीं राइट टू फ्रीडम मिलता है पॉइंट्स चेस्ट लेना ही भूल गया यार मैं क्या नाम है सम भैया आप मुझे ये बता सकते हो क्या हम कमीशन से भी ये नहीं कर सकते You should really bring the Knights of Favonius with you next time. क्वेश्चन है नहीं ये लास्ट वाला मुझे जो क्वेश्चन है ये करना है ये वाला क्वेश्चन भी सच्ची में करना है
स्ट्रीम में लोकेशन बता दो। ये इधर 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 आओ इधर आओ इधर आओ। ये देखो मैप पे देखो, मैप पे ये वाला लोकेशन, ये वाला अंडरग्राउंड माइंस का ये वाला लोकेशन। मैं इधर जा ही नहीं पा रहा हूँ यार, इधर जाने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। इधर वाला जाने का रास्ता है ही नहीं। आई मीन लाइक व्हाट द हेल, उधर जाना है भैया, उधर। Speed of light. उधर जाना है बस। Osmanthus wine tastes the same as I remember. ये क्या बोल रहे हैं यार? But where are those? जोंगली बहुत पकड़ता है। ओके समझ गया, आया समझ आ गया। कहाँ से जाना है? कहाँ गए ये कहाँ गए? कहाँ से जा रहे हैं? यार ये जोंगली का ज्यादा ही वॉइस का थोड़ा सा ना लाइक ऐसा हैंडसम के एक और चीज होता है ना, वो वाली टाइप आ रही है मुझे। ये कितने पे? कस्टम पे? I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? कहाँ पे गए? कहाँ पे गए ये? गाइस 80 तो हो ही गए हैं, अब एक काम करो 90 भी कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ 90 भी कर लेते हैं गाइस, 90 अच्छा होगा, कर लेंगे हम 90 भी कर लेंगे जल्दी। आप खाली सब्सक्राइब दबा दो बस और ये नहीं लगता इनको ये जगह से जाना है। हाँ इस जगह से जाना है। चलो गाइस इधर से जाना पड़ेगा, इस तरफ से जाना पड़ेगा। वैसे वो जो फटवी का स्नैजना है वो डिप्लोमेट है ना, ये वही कर पाएगा शायद। क्वेस्ट का नाम है, क्वेस्ट का नाम क्या है? Appearance in the dark. लिटरली 72 हो गया है। Incoming. Time for retribution.
दीदी कहाँ रहती है भाई? वो दीदी थी ना, वो कहाँ रहती है? हाँ इधर इधर इधर। I'm sorry. क्या बोलना क्या चाहती है भाई? long. कहाँ पे रहता है यार? इधर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं भाई। सेम जगह एक स्लाइम कितना पावरफुल हो रहा है देखो। वो भी आ गए? हाँ आ गए थे। अरे कुछ बुक खरीदना था, आर एस अग्रवाल का मैथ का बुक मिल लाइन, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा दे रहा था, 500 रुपये। आ जाओ बोल रही, आ जाओ। ओके आ जाओ। अरे नहीं नहीं, वो कुछ उनको मिल रहा है, मिल गया, आ जाओ। अच्छा ये पॉइंट्स क्या है? कौन सा पॉइंट? सबको पॉइंट्स नहीं मालूम? यहाँ पर पॉइंट ओ आशुतोष भैया को मालूम है उनसे अच्छा मैं भी बोल देता हूँ क्या हाँ, वो है कि आप जब जितनी देर स्ट्रीम में रहोगे उतने देर को आपको हर 5 मिनट में 5 पॉइंट्स मिलेंगे। उस 5 पॉइंट से आप विश कर सकते हो, लाइक उसको विश करने से और पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स मिलने से क्या होगा ना, कुछ मीम्स ऐड किए मैंने, वो मीम्स आपके लाइव स्ट्रीम पे दिखाई देगा, मेरे लाइव स्ट्रीम में दिखाई देगा। ओके लाइव स्ट्रीम
मतलब ना वर्ल्ड लेवल बढ़ा के ना बहुत गलती कर। अरे रुको तो पास तो जाना है ना। हाँ तो ये जितने उसके पर्टिकुलर मीम्स मिलेंगे आपको, उसके उस मीम्स को रिडीम करने के लिए आपको कमेंट्स दबाने पड़ेंगे। जितना ऊपर का वेपन अनलॉक करो। अरे एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर उसको लिखना पड़ेगा आपको एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर विश स्मॉल लेटर सब, एक्सक्लेमेशन मार्क विश एंड फिर ये हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क फिर विश फिर 50 और विश के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। और 50 नहीं, आपके पास जितने पॉइंट्स होंगे उतने कर सकोगे आप। 50 नहीं हो पाएगा, आपको 10 करना पड़ेगा। ओ आपके पास है एक्चुअली, आपके भैया ने किया है, लेकिन देख के आपके भैया से सॉरी आपके छोटे भाई से पूछ के करो है ना। तो उससे होगा क्या, इससे विश 50 से इससे आप ये रिडीम कर सकते हो, बट एक्सक्लेमेशन मेन्यू टाइप करो। ओके कर लिया। किया ना? हाँ किया, कहाँ दिख तो नहीं रहा मुझे। मतलब करना क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क सेव, एक्सक्लेमेशन मार्क फिर मेन्यू जैसे किया है। अरे एक्सक्लेमेशन मार्क मेन्यू मेन्यू। ओके एक्सक्लेमेशन मार्क और मेन्यू मेन्यू का मैंने गलत है क्या? नहीं ठीक है। ये देखो तो एक है हेलो, एक है इमोशनल, एक है मजा आएगा, एक है पैसे, एक है बाय, एक है दूध। मतलब देख रहे हो ये लाइक मीम्स है। आपके पास एक हर मीम आपको 10 पॉइंट्स के लिए पड़ेंगे, लाइक 10 पॉइंट्स है ईच कॉस्ट। और फिर उस 10 पॉइंट्स का मीम एक एक्सक्लेमेशन मार्क फिर रिडीम लिखो और फिर इनमें से हेलो इमोशनल मजा आएगा ये लिखो। इनमें से कुछ एक लिख दो उनमें से, बस फिर आप मीम देखो। बहुत एक्सक्लेमेशन है ना। थैंक यू सम भैया, आपने मेरा ये क्वेस्ट कंप्लीट करवा दिया, मेरे को मिल ही नहीं रहा था। थैंक यू। 185 हाँ इनको बहुत सारे मिल गए यार। अरे मेरे को बेल रिंग करवाना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। घंटा कहाँ से दबाना है? रिडीम हेलो। रिडीम ठीक से नहीं लिखा, आपने स्पेलिंग गलत लिखा। ओके मुझे नहीं लगता गलत लिखा मैंने। नहीं आपने गलत लिखा है। डी डबल ई होता है, डी ए एम नहीं होता है, डी डबल ई एम होता है भैया। रुको एक मिनट मैं चेक करता हूँ। आपको किसने बताया? आर ई डब्ल्यू, ओ हाँ आर ई टी डब्ल्यू एम होता है। रिचार्ज करो। क्या रिचार्ज करो? हेलो। चलो अब देखो स्ट्रीम देखो थोड़ा सा, तब आपको देखो क्या हुआ है। थोड़ा लेट है ना, लेटेंसी। हाँ हेलो 14 पॉइंट्स। अब स्ट्रीम देखो बस क्या होगा। इधर बोल रहा है ये तो। हाँ इधर कहाँ? ओह यस क्या बात देखा? है।
हाँ ये कर सकते हैं, ये छोटा सा गेम है आप कर सकते हो और ये दो इसका 20 मिनट्स तक होगा। ये कर क्या रहे हैं? बस मैंने तो उसको भी एक्सप्लोर नहीं किया, पता है क्या कैदम वाला? हाँ अच्छा तो हिंदी को कहाँ लगा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे लग रहा है दोनों को एक साथ लेकर जाना है। क्या मालूम नहीं, इधर से लेके आया ना। कहाँ पे जा रहे हो? ये इनको पता है, सम भैया को पता है। वो नहीं कर सकते ना, तुम्हारा वर्ल्ड है। ओ रुको 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 रुको, अब मुझे समझ में आया क्या करना है। एक सीढ़ी को इधर लेके जाना है। हाँ खुल गया पता है, अब समझ में आया। Better than nothing. Where did I go? ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? बताओ। नहीं 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 नहीं, मेरे पास हेल्थ नहीं है, मेरे पास हेल्थ नहीं है, मैं मरूंगा भगवान इस बार तो पक्का मरूंगा भगवान। लग जाएंगे भगवान, लग लिए भगवान, वो आ गया मेरा पप्पा जी आ गया। Vengeance will be mine. Cut to the chase. अरे पहले उसको डिस्ट्रॉय करो, वो वाला है ना ये ब्लैक खत्म। नहीं हमने वैसे भी कर दिया। क्या? कुछ नहीं, हमने कर दिया। Dun they did dun 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 dun। क्या कर रहे हो? अरे मेरा वॉइस एको हो रहा है, आप थोड़ा कम करो। We'll need more where that came from. हाँ मेरा वॉइस एको हो रहा है आपके इससे। Approach the dark fog। अब मुझे कहाँ जाना है ना, इधर जाना। I just had a fucking brown moment। पापा मांगो Abyss Heralds। अच्छा एक सेकंड में मुझे अपना माइक बंद करना पड़ेगा। क्या ऐसा करो? Behold, the abyss has come. Booba, get them! Eat this! The gifts of grace. Brace yourself. The power of With sword comes shadow. shall set you free. There can be no excuse for defeat. What a...
हाँ तो मर गए वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है उन लोग का सीएल होता ही नहीं Peace and hope find you. Grace be upon you. How? I had only just... Yeah. My flame. Got lucky that time. Hear ye Incoming. the words of joy. Grace be upon you. Peace and hope find you. Where did I go wrong? Revelation. Right idea. Wrong time. Endure. तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे स्ट्रीम। आई होप आप लोग मजा आया होगा और हमारे 80 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे स्ट्रीम अगेन एंड अगेन एंड तो थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे स्ट्रीम। हम मिलते हैं रात की स्ट्रीम के साथ सी ऑफ थीव्स शायद से। तो के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट एंड सायोनारा। गुड नाइट की बोल रहा हूँ।